सदर्न पंजाब का बैटिंग स्कोर कार्ड है ये। ज़ैन अब्बास बिस्मिल्लाह के हाथों कैच आउट हुए। वली की बॉलिंग पे 40 रन बना सके। अली रफ़ीक का बहुत ही उम्दा बॉल हुआ था उमैद आसिफ की जानिब से, 14 रन बना सके। उमर सिद्दीक बहुत ही ख़राब शॉट, 7 रन बनाए उन्होंने। सहब अदर अनलकी रहे, अच्छा लग रहे थे, अच्छी मिडल कर रहे थे बॉल को, 24 रन बना सके। सलमान अली आ गए, एक और ख़राब शॉट, सीधा कैद दे बैठे उमैद आसिफ को। 50 रन, बहुत उम्दा इनिंग थी ये 50 रन की उनकी। उमैर एक और मैच जज किया उन्होंने, वली के हाथों बोल्ड हुए। तब जो प्रेशर है वो सदर्न पंजाब पे बहुत हद तक बढ़ गया है। 154 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी पहले दिन का टी भी नहीं हुआ है। मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। इस पार्टनरशिप को लंबा लेके जाना होगा इन दोनों को। दोनों में अहलियत है, इमरान और आमिर यामीन दोनों ऑलराउंड क्रिकेटर हैं और यहाँ से अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए सदर्न पंजाब के लिए तो क्या ही बात है। जी हाँ, दोनों बैट्समैन जो हैं अपने कैरियर में सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो बिलीव होना चाहिए कि एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर लगाएं और अपनी टीम को मुश्किलात से निकालें। यहीं पर अली पता चलता है करेक्टर आपका कि आप कितने कीन हैं और कितना प्रेशर में आप जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं, चाहे एनी सर्कमस्टांसेस हों या आप बॉलर हो, एज ए ऑलराउंडर आप खेलें, आप 100 स्कोर करें। जी हाँ, वैल्यूबल प्लेयर तो आप अपनी टीम के लिए तभी होंगे जब आप मुश्किल हालात में रन बनाते हैं और यहाँ पे सदर्न पंजाब एक मुश्किलात में घिरी हुई है। लेग स्टंप मिस करता हुआ ये बॉल, लेग स्टंप पे ही पिच हुआ था और एंगल के साथ लेग स्टंप की तरफ ही जा रहा था, तो अंपायर का दुरुस्त फैसला है ये। इसे कट कर दिया, हवा में बॉल था लेकिन फील्डर के साथ से होता हुआ बॉल 4 रन की तरफ आसानी से चला गया। तो आमिर यामीन की जानिब से एक अच्छी बाउंड्री लगाई है यहाँ पे। काशिफ भट्टी को खुश होंगे क्योंकि हवा में बॉल रहा था काफ़ी देर। यहाँ पीछे गिरा बॉल था, जोर से हिट लगाने गए थे और थोड़ा सा लकी भी रहे कि फील्डर के से दूर था। लेकिन काशिफ भट्टी की अगर मैं बॉलिंग देख लूँ तो अब तक कोई ओवर ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन के ऊपर उन्होंने 6 बॉलें गिराई हों। बैट्समैन को बैकफुट पे लेकर आते हैं, 6 बॉलें फ्रंट फुट पे उसको गए। आपके पास शॉर्ट लेग पड़ी है, आपके पास 3 पॉइंट इस दफा फिर पीछे गिरा हुआ बॉल था, तो जब बैकफुट पे चला जाता है बैट्समैन तो इजी हो जाता है। ओवर का अख्ताम हुआ 158 पे 6। ताज वली अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फेवरेट बॉलर रहे हैं ताज वली इस टूर्नामेंट में, क्योंकि दूसरा मैच मैं कवर कर रहा हूं, पूरा दिन भागते हैं ये, थकते बिल्कुल नहीं है, बड़ी जानदार बॉलर हैं ये, एक लाइन पे बॉल करिए जाएंगे पूरा दिन। यही क्वालिटी और एक कैप्टन के लिए ऐसा बॉलर अपनी टीम में होना बहुत खुशाइन बात है कि जिसको जब भी आप बॉल दें वो 100% अपनी परफॉर्मेंस दे। ये देखिए यहाँ पे बॉल करते रहेंगे पूरा दिन, यही क्वालिटी है ताज वली की कि कोई लूज बॉल नहीं देते हैं। हाँ, अगर आप अच्छा बॉल बना के मारें, अच्छा शॉट मारें उनको, आप गलत बॉल हार्डली करते हैं। ये कदामत फास्ट बॉलर हैं, जानदार लगते हैं। सत्रहवां ओवर कर रहे हैं, 41 रन दिए 2 विकेट्स लेके, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। अली आपने सही एनालाइज किया, बिकॉज अगर अभी देखें 54 ओवर हो चुके हैं और ऑलरेडी 17वां ओवर ये कर रहे हैं, तो ये आपकी बात की तस्दीक कर रहा है। सही आपको बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, आपकी बात है कि जिस रिदम से बॉलिंग करे चले जा रहे हैं, बिल्कुल जिसे फ्रेश लुक भी नज़र आ रही है इनकी, और ऐसे कप्तान के लिए ब्लेसिंग होते हैं ऐसे बॉलर्स के, वो जब उनको बॉलिंग जो है और लंबे स्पेल वो कर सकें। लेकिन एक फास्ट बॉलर की कमी मुझे नज़र ज़रूर आई है। जी हाँ, हम लोग भी बहुत हैरान हुए थे सुबह जब हमने दोनों टीम्स देखी, घास मौजूद था पिच के ऊपर, और जब हम टीम की नज़र
पे नज़र डालते हैं तो सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स थे, मोहम्मद तला, खुरम शहजाद, दोनों बहुत क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं जिनको शायद इमरान फरद और कोच फैसल ने प्रेफर नहीं किया है। शायद थोड़ी चूक हो गई उनसे, लेकिन लकी रहे हैं कि सिचुएशन अभी उनके हक में गई है। 6 विकेट्स हासिल कर लिए हैं, ये बहुत आसानी से सदर्न पंजाब की तरफ जा सकती थी, लेकिन भलाई हो उनकी कि उन्होंने बहुत इजी विकेट्स दे दिए। शॉट 1। ताज वली, जब हम आखिरी मैच यहाँ कवर कर रहे थे, यही दोनों टीम्स आमने सामने थी, तभी बहुत लंबे लंबे स्पेल किए थे इन्होंने, और बहुत जानदार एक ही पेस से बॉल करते हैं। कमाल के फास्ट बॉलर हैं। और हैरानगी वाली बात हुई, अकबर और रहमान भी लेग स्पिन कर लेते हैं। अकबर, जल्लाद, काशिफ भट्टी, 3 स्पिनर्स को प्रेफर किया है आज बलोचिस्तान ने अपनी टीम में, और सिर्फ 2 सीमर उमैद आसिफ और ताज वली। बहुत हार्डवर्क है इन दोनों के लिए। 17 ओवर्स कर चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल को जाने दिया। प्रीवियस ओवर इसमें आउट किया था, बॉल बाउंस हुआ था, और ये देखें ऑफ स्टंप पे जाके जो बॉल लगा है, स्टंप के बाहर से अंदर आया। अंदर भी जब लेकर आते हैं आप देखें तो गेंद उनका जो है मिडिल स्टंप पे फिनिश हो रहा होता है, थोड़ा बाहर से लेकर आते हैं, मिडिल स्टंप पे फिनिश हो रहा होता है। और यहाँ पर ये कि बैट्समैन अगर मिस करता है या ऑन खेलने जाता है तो अगर हिट हो तो चांस ज़रूर बनता है वहाँ पे। तो ये क्वालिटी होती है जब आप इन स्विंगर करते हैं। तो ताज वली का एक और ओवर ख़त्म, 158 में 6। राजू ठीक है, गुड। जहाँ 55 ओवर्स का खेल हो चुका है, 158 पे 6। सदर्न पंजाब स्ट्रगल करते हुए इस इनिंग में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था इन्होंने, और मेन बैट्समैन सारे ही गलत शॉट मार के आउट हुए हैं मेरी नज़र में। एटलीस्ट महमूद भाई शायद इत्तेफाक नहीं करते हैं इससे, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी विकेट्स आज गिफ्ट किए हैं इन्होंने। कट कर दिया है, फील्डर मौजूद हैं। काशिफ भट्टी जो हैं, फिर एक शॉर्ट बॉल, बैट्समैन बहुत इजी गोइंग हुआ है इस वक्त। ये टाइम है, नए बैट्समैन हैं, पुश करें, प्रेशर डालें, और दैट्स अ बेटर लाइन, दैट्स अ बेटर लाइन। फ्रंट फुट पे बैट्समैन, एक कैचिंग पे भी आपने लिया हुआ है, स्लीप पॉइंट है, शॉर्ट लैग, स्लिप, इनको यूज करना है तो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा बैट्समैन को। दैट्स अ बेटर लाइन। इस लाइन पे 1 ओवर करें, 2 ओवर करें, फिर बैट्समैन भी चांस ले सकता है, लेकिन बैट्समैन को जब शॉर्ट बॉल मिल जाए, अगर उसको ऑन पे रन मिल जाए, कट पे उसको रन मिल जाए, तो वो नहीं फिर कुछ जबरदस्ती शॉट खेलता। शायद बात सुन ली आपने, आपकी उन्होंने बेहतर ओवर किया है क्योंकि स्ट्रेच करवाना होगा। दोनों फील्डर सिडनी मिड ऑन, सिडनी मिड ऑफ मौजूद हैं, तो उनको प्ले में लाना होगा, और अगर आप पीछे बॉल डालते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए वही एक बार फिर, जैसे अभी आपने कहा, पीछे बॉल कर दिया। जब आप लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, आपको अपनी लाइन और लेंथ को बहुत सोच समझ के बॉल करने होते हैं। ये बेहतर बॉलिंग है। 56 ओवर्स का खेल हो गया, 158 पे 6 खिलाड़ी आउट हैं। मोहम्मद इमरान और आमिर यामीन मौजूद हैं क्रीज पे, और राउंड द कॉर्नर है। हम टी होने में लगभग 10 मिनट है। एक मुश्किल सा पीरियड है ये इन दोनों बैट्समैन के लिए। उमैर गलत लाइन को रीड कर गए। तो जो मैं तोहफे की बात महमूद भाई करता हूँ, तो वो ये 4 विकेट्स हैं, 4 प्राइज विकेट्स हैं। सलमान आगा इतनी उम्दा फॉर्म में, इतने रन्स करके आए हुए हैं आप, और इस तरह विकेट देना मुझे समझ में नहीं आया। ये बॉलर्स को क्रेडिट भी जाता है ना कि बॉलर उसको टीज करता है
तो फिर बैट्समैन बैट शॉट्स खेलते हैं। सो ये तो पार्सल ऑफ द गेम है। समटाइम्स होता है कि बैट्समैन गलत हिट मारते हैं, लेकिन गलतियों से अपनी सीखना चाहिए। जो अगर आप गलती करते हैं वो अगर आप दोहराते हैं इट मीन्स। और बहुत तेज़ी के साथ ये सिंगल लिया है, काशिफ भट्टी थे पॉइंट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ गलत करते हैं, आप रैश होते हैं, तो उस पर ओवरकम करें, उसको आप अपनी इनिंग को बिल्ड करें, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। रादर कि आप अगर फिर वो आके उसी तरह खेलें और उसी तरह फिर आउट होते हैं, तो इट मीन्स कि आप अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहे। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट के अंदर। कैचेस भी छूटते हैं, जैसे आज भी छूटा था सुबह कैच। तो दफ़ा पॉइंट के पास से निकालने में कामयाब हुए, थोड़ा सा विद दिया था इसमें। वली ने 2 रन आसानी के साथ बनाने में कामयाब हुए। आमिर यामीन, आमिर यामीन की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था इनसे। जब ये पहली बार बड़ी क्रिकेट खेलने में आए थे, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन समहाउ बड़ी क्रिकेट में उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर सके। इंटरनेशनल क्रिकेट में नए बॉल के अच्छे बॉलर हैं, स्विंग करते हैं बॉल को। अच्छा बाउंसर टेस्ट किया इमरान को। आउट होने का नजर, ये तो अनलकी रहे इसे कहना चाहिए। और रन आउट, ये भी देखें आप, गिफ्ट तो नहीं कह सकते, ऑटोमेटिक बाहर निकलता है। ये मिस रीड ये कर गए, बॉल को मिस लाइन मिस कर गए, और वहाँ आगा जो है वो तो ऑन खेल गए थे, वो तो मिस कर गए, जज मिस कर गए। बॉल महमूद भाई, आपको क्या ज़रूरत है उसके के साथ छेड़छाड़ी करने की? आप 50 पे मौजूद हैं, प्रेशर है, इतना बाहर बॉल और आप बिला वजह छेड़छाड़ करेंगे उसके साथ, क्यों? अगर आप बॉल देखें, बॉल लेग स्टंप पे पिच हुआ था, तो उसको हल्के से टैप कर रहे थे ऑन की तरफ, थोड़ा सा स्लो आया, मिस जज कर गए। मकसद मेरा ये कहने का है कि वो बैट शॉट नहीं मारी है उन्होंने। अगर आप शॉट कहने जा रहे हैं तो शॉट नहीं मारी हो, थोड़ा सा हाँ मिस जज जिसे कहना चाहिए वो कर गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारी ऐसी इनिंग्स आती हैं जिसमें आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन फिर अगर आप उससे सीख लेते हैं तो फिर फेयर इनफ। आई होप कि आगा सलमान ने इस शॉट से सीखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर है इस टूर्नामेंट में आगा सलमान। 600 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। इसे पुल कर दिया, फील्डर वहाँ मौजूद है और थोड़ा सा ही करीब गिर गया बॉल, वरना एक और विकेट आ जाती है ताज वली के लिए। ट्रैप किया था, इससे पहले भी बाउंसर किया था, और ये देखिए बहुत अच्छा बाउंसर और बॉडी के ऊपर बैट्समैन गया खेलने के लिए, लेकिन लकी रहे थोड़ा सा आगे गिरा है, जबकि फील्डर काफ़ी आगे थे, लेकिन फिर भी सेफ रहे यहाँ पर। ताज वली अच्छी बॉलिंग करते हुए, ओवरऑल अली बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, एक लंबा स्पेल कर रहे हैं। अच्छा बॉल कवर करते हुए स्टंप को आराम से खेला। ओवर का अख्तिताम 162 पे 6। बलोचिस्तान का बॉलिंग कार्ड 4 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी है। 18 ओवर्स ताज वली ने किए हैं, 45 रन देके 2 विकेट्स हासिल किए हैं। उमैद आसिफ ने भी लंबे ओवर्स किए हैं, 15 ओवर्स 32 रन और 2 विकेट हासिल किए हैं। काशिफ भट्टी 18 ओवर्स में 48 रन देके अनलकी ने अभी तक विकेट हासिल नहीं किए। जलाद खान ने 6 ओवर्स में 37 रन दिए और 1 विकेट हासिल किए। 162 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं सदर्न पंजाब के। और दाद देनी होगी इमरान फरद की कैप्टनसी की भी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास बॉलिंग में, सिर्फ 4 ही बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है बॉलर्स को, अच्छी कप्तानी की है। और क्यों ना भाई, क्यों इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, प्रॉब्ली इस ग्राउंड में इनसे ज़्यादा क्रिकेट किसी और ने नहीं खेली होगी जितनी इमरान फरद ने खेली हुई है। इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक भी, T20 भी, हर तरह की क्रिकेट।
और कमाल के बैट्समैन रहे अपने टाइम के इमरान फरद। ऑल्दो अपना आखिरी सीज़न खेल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे यंग क्रिकेटर्स को उनसे, इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी भी और बैटिंग भी। बड़ा शॉट खेल दिया मिड विकेट की जानिब, 6 रन होंगे। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा रिलीज शॉट जिसे हम कहें आमिर यामीन की जानिब से। मिड विकेट की जानिब गैप मौजूद था, मिडिल एंड लेग पे बॉल पड़ा हुआ था, और अच्छे तरीके से मिड विकेट की जानिब खेल के 6 रन हासिल किए। जल्दी पिक कर लिया था बॉल को आमिर यामीन ने, अच्छी एग्जीक्यूशन मिड विकेट बाउंड्री पे, पहला छक्का आमिर यामीन की इनिंग का। काशिफ भट्टी से ज़्यादा खुश नहीं होंगे इमरान फरद, बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ के साथ। मेन बॉलर हैं, काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड होगा इनसे, लेकिन उनसे और तेज़ी से एक रन चला लिया है, हाथ में खेल के भाग पड़े आमिर यामीन। बहुत ही उम्दा रनिंग, और जिस स्ट्राइक रोटेशन की हम बात करते हैं, ये दोनों अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। काशिफ भट्टी जो पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, कभी पीछे करते रहे, कभी ज़्यादा मुंह में बॉल कर दिया, तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है उनकी। गली में भी एक फील्डर ले लिया है, 4 फील्डर क्लोजिंग, स्लिप, गली, स्लिप पॉइंट, शॉर्ट लेग। पेस बहुत तेज है। इसी तरह ओवर का अख्ताम 169 फॉर 6। जी हाँ, और इसके साथ ही चाय के वक्फे का वक्त हो चुका है। सदर्न पंजाब इस सेशन है, पहले सेशन में 29 ओवर्स हुए, अच्छी ओवर रेट रही है, 79 रन दिए, 3 विकेट्स हासिल किए, और सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेशन रहा दूसरा भी, 29 ओवर्स में 90 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। ओवरऑल एक अच्छा दिन रहा है बलोचिस्तान के लिए। अगर हम बात करें, टॉस जीत के सदर्न पंजाब ने पहले बैटिंग की थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बड़े रन होंगे, लेकिन एक अच्छे तरीके से यूज़ किया है इमरान फरद ने अपने बॉलर्स को। और ये हाईलाइट्स हैं इस सेशन की। आगा सलमान ने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, साथ सैफ बदर ने बहुत ही उम्दा तरीके से कवर ड्राइव्स खेले थे। दोनों की पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। देखिए एक बार फिर बहुत ही उम्दा तरीके से सैफ बदर ये शॉट मारते हैं। लूज बॉल को बिल्कुल बैट्समैनों ने जिसको रन्स लेना लिए, कट भी अच्छी मारी, ऑन पे भी अच्छा खेला दोनों बैट्समैनों ने। और अगर आप ये देखें कितना लेट ये शॉट खेला था, और दोनों बैट्समैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे और इस सेशन के अंदर। और आमिर आगा ने अपनी ये देखें बैट लग को ये लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था और एच हो गया, और ये रन आउट बदर हाथ लगा उनका, और ये बैट लग की ये थोड़ी मिसजज कर गए थे बॉल को। तो इस तरह इस सेशन के अंदर जो है जो विकेटें गिरी। जी हाँ, बैटिंग स्कोर कार्ड अगर हम देखें, ज़ैन अब्बास 40 रन बना के ताज वली के हाथों आउट हुए, अली रफीक ने 14 रन बनाए, उमैद आसिफ के हाथों आउट हुए, उमर सदीक बहुत ही खराब शॉट जलाद के हाथों बोल्ड हुए 7 रन बनाकर, सैफ बदर अनलकी रहे, रन आउट हुए 24 रन पे, सलमान अली आगा एक और ख़राब शॉट 50 रन, जिंदा 50 से 2। और ये पार्टनरशिप 42 रन की पार्टनरशिप रही पहली, 19-0, और ये 75 रन की जो पार्टनरशिप इस सलमान अली आगा और सैफ के दरमियान, ये हाईलाइट रही है इस इनिंग की अभी तक। 2 विकेट्स ताज वली, 2 विकेट्स उमैद आसिफ, काशिफ भट्टी को भी विकेट हासिल नहीं कर सके। जलाद खान ने सिर्फ 6 ओवर्स किए और 1 विकेट हासिल किए। ये अभी चाय के वक्फे का वक्त है, तो चाय के वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। That's a nice shot. That's going to be 4 runs. Just go and fetch it. That's a nice shot. Very nice shot. He found the gap. देखिए 50 रन मुकम्मल हो गए। सलमान अली आगा के बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा।
So day one at tea, Southern Punjab's problems continue as they lose a few more wickets after lunch. And the way Salman Agha got out, it was just a bit of a shocker for their side. And they've been losing wickets at regular interval and found themselves in trouble with 169 for 6. Not many or any partnerships talking about. 75 between Salman and Saif is the major chunk of this score. Otherwise, none of the pairs have managed to put on some valuable runs. Bowling has been good. They've been rewarded. 2 wickets for Wali and Umaid, the only 2 fast bowlers in the side. And Jalad getting 1 wicket before lunch. So that's the scenario. T with 169 for 6. And Balochistan is actually in the driving seat. Let's see what happens on the final session on day 1.
Welcome back after tea at the National Stadium, Karachi, where round 7 game between Southern Punjab and Balochistan is underway. And it's been Balochistan through and through, I think in the first session as well. No doubts about the second session that the regular wickets that Balochistan have managed to grab have put Southern Punjab under check. 169 for 6 by no means is what Southern Punjab had planned when they won the toss and decided to bat first. Even if you look at the partnerships, 75 is the highest of 104, otherwise they haven't really got off. That's the first wicket, just hanging the bat out, and the catch taken by Tasawwur. Then wild slog, just spins in, don't know where he was going with that. That's again too close to the body. This I can't explain. Just ball down the leg side, just offering the bat, and then a bit unlucky, Saif Badr getting a finger onto the ball while it was driven back to him. And then this is the last one. Taj Wali's been paid off with that hard work of his. He's been very persistent. 2 wickets for him, 2 for Umaid, 1 from Jalal. Kashif is wicketless, but he's been all right. He has been economical though. So Amir Yamin, he's not out 19. He's got a new partner, Imran. And this final session will decide where the day goes for Southern Punjab. They might be wrapped up, or if they can form a partnership here and give the opposition a bit of a fight back. Yes, full marks to Taj Wali. He's bowled his heart out. 18 overs, 6 maiden. He's taken 2 for 45. That's the field for him. The first ball after tea coming up. 2 slips a gully, point to cover, a mid-off on the offside, a mid-on, a mid-wicket and a long leg on the onside. Here is Taj Wali bowling to Amir Yamin. Amir Yamin, very good budding all-rounder. Always unlucky to miss the boat for Pakistan. He has similarities with Abdur Razzaq, even if you see in his bowling run-up and his approach, very athletic. Good hard-hitting batsman. He's facing up to Taj Wali. Hangs his bat out there. Lucky didn't get a touch. Otherwise, there are 2 slips. And the wicketkeeper, Bismillah Khan. That one moved a bit as well. In fact, it's 3 o'clock at the moment. Say in another half an hour or 3/4 of an hour, shadows will start lengthening. They've already begun to do that. And then the ball will move even more. Short, and that's in the air and out. Thank you very much. I was praising Amir Yamin, and there it is, he perishes. And that is what is called, Sikandar, we were talking at lunchtime, I think, about commentators' curse. Very ambitious with deep square leg and a wideish deep fine leg in place. When you take the ball around when he offers you a shorter one. 19 for Amir Yamin, and problems for Southern Punjab continue. 169 for 7. They've lost wickets in every session so far. Lost wickets in the first session. And in between lunch and tea they lost a couple of wickets. And now, first thing after tea, they've lost a very, very fine batsman. And, well, let's call him an all-rounder. We are only in the 59th over. 169 for 7. These two teams, remember, are placed at 3rd and 4th in the chart.
We are halfway through. Ilyas is the new man in, right-handed batsman. 9 matches, 100 runs. An average not really worthy to write home about. It's a good inclusion. He's back in the side because he's a very good bowler. It'll be very handy for Southern Punjab when they come out. That's a short ball. Too big on him. Got really high, allowed that fielder at deep square leg to run to his right and still get into good position before the ball arrived. Probably would have liked to hit it a little flatter than that. But just like I said, got bigger on him. He played it from in front of his eye line or just above that. In fact, must have been above that. In front of his eye line would have been a good shot. He's not a very tall man. 3 for 45 for Wali. Really happy to see those wickets column for him because he's been patient. He's been very patient, especially in the first 1.5 hour of day's play. With a new ball, he was not trying too many different things. He believed that the surface and the conditions will support him, and it did. That's Zahid Mahmood batted up. He'll also have a role to play later on in the game with his leg spinners. A lot of oohs and ahs, but in the end it's the wicket-keeper who collects that ball outside the off stump, harmless. $169 for 7 after 59 overs. That's the story of the day's play. There are 2 other matches going on at the moment, and I think, Sikandar, you have the details. Well, Northern versus Central Punjab at the UBL ground. I think Northern's done well, but they were 88 for 5 at lunch. At tea, they managed to get 203 for 8. Mohammad Nawaz gets a 50. Bilawal Iqbal's got 3 for 62. And at the State Bank ground, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh, where at tea, Sindh are 173 for 4. Asad Shafiq is batting at 45. Bowlers from Khyber Pakhtunkhwa, Irfanullah 2 for 27, Sajid Khan 2 for 59. So both these games in terms of runs are ahead of us. We are 169 for 7 here at the National Stadium. But Asad Shafiq 45 not out. He owes a lot of runs to his side and his players. Sharjeel Khan got 57. Sharjeel, of course, lives by the sword, he dies by the sword. But Asad Shafiq, on the other hand, has been very subdued. He faced 35 deliveries and didn't get off the mark in an innings which I saw. But I think then someone must have had a word with him and says, all right, come on, you're capable of better. And Umar Amin, Hamad Azam and Mohammad Nawaz have all been doing well in this tournament. Of course, the leading run scorer of the tournament is Salman Ali Agha, whom we saw today. He got a 50 and then, of course, out in an absolutely bizarre manner. Kashif Bhatti bowling the last ball of the 60th over. He's surrounded. There's a slip, a very close-in gully, or you can call 2 slips. A silly mid-off and a silly mid-on. The over bowled 169 for 7 after 60. Here are the top run getters. Salman Ali Agha. This is before this game. 600 runs, an average of 75. Saud Shakil of Sindh, 588 runs. Hamad Azam, 572. Kamran Ghulam, he's done well, 547.
And Umar Amin at last coming into some runs, 511. These are the 3 wickets. The first one got behind, the second one cleaned up. Thank you very much on your bicycle, mate. And this one is caught at deep backward square leg. A good running catch, well judged, and Taj Wali is absolutely delighted. And so he has the right to be. That's driven well, found the gap between cover and extra. It will be cut off. Just being repetitive probably, but then just noticing the top batsmen that we just saw, all the highest scores in the final column for all those top 5 batsmen haven't been scored on this ground. It's been UBL or State Bank. This ground, not saying it's not batting friendly. Well, it's just so. That's a good shot. This time he's got more power into it. This will go to the boundary. No point chasing those. That's a lovely shot. Cover drive, stylish, elegant, precise, timed well, executed brilliantly. Deserved 4 runs. Yeah, so coming back to those higher scores, 169 not out, 100. It's just a coincidence probably that all those higher scores from these top 5 batsmen, they haven't really got amongst runs here. Even Hussain Telat getting a double 100 wasn't here. This ground has been an equal opportunity for both batsmen and bowlers. Even you look at the highest wicket takers, at one point in time were all spinners, and spin hasn't really done much for them on this ground. It's been the other ground, State Bank, National Bank, UBL, yeah, the wicket takers. The captain of Northern, Noman Ali, is leading the pack. 43. It's all before this game. Zahid Mahmood is playing this match. Look at that, Central Punjab has got 2. And you'd believe that the longer format is won by bowlers. If you got 2 bowlers in your top 5 and you're still at the last in the table, that's a bit strange. Well, Waqas Maqsood has done well. He's taken 26 wickets at an average of 20.54. He's bowled well in this tournament. Ahmed Safi, also from Central Punjab, he's taken 22 wickets. Southern Punjab, Zahid Mahmood. You'll be seeing him in this innings. Or the next innings, that is. He will be batting in this innings. End of the over, 61 gone, 176 for 7. Amir Yamin went for 19 today. He was caught Taimur of Taj Wali in the countryside, a deep backward square leg of a mistimed hook shot. And that leaves Imran and Ilyas in charge with Zahid and Ziaul Haq to follow. Kashif Bhatti plugging away, none for 56 so far. Yeah, that none for 56 must be playing on his mind. All the other bowlers have got wickets here. Jalad got 1, Umaid and Wali got 2. In fact, Wali got 3, Umaid got 2.
No matter how good you are in a spell, you still want that wickets column to be filled up, at least with one wicket, just to boost that confidence, just to get going. This is the important part back in the 90s, when you see that when the tail starts, your best bowlers come around and then they want to just wrap it up. Ball into the stumps, get those wickets as quick as possible. Here, just get a feeling you're waiting for them to make a mistake. Yes, 9, 10 and Jack can be very troublesome and a nuisance if they are not dealt with swiftly. That is why they should be wiped off as soon as possible. We saw Sindh making that mistake, and probably they had spent a lot of time out there as fielders and bowlers. Put on 150 plus runs the last 3. That completely changed the game. They took their lead where Basit Ali, their head coach, was expecting 350 is chaseable. They went on to get 400 and something. 450 plus 80. Took the game away. You've seen cricket for a long time. I'm talking about the longer format, especially in the domestic circuit, sometimes in the international as well. This is a snooze period in the game where nothing's happening. Just around before tea and after tea, where you get a feeling that the bowling side and the batting side is not really trying anything extra. Would you like to see something different from the fielding captain? Some different positions. Try to test these tail-enders instead of just bowling the regulation 2 slip 1 gully. Quite right. This is they're just going around as if it's sort of, this is the normal situation. There's nothing out of the box, as they say. Maybe a bowling change, maybe a he might make a mistake. You see, batsmen always are delighted, or anyone who's batting, when a non-regular bowler comes on. He says, here is easy meat for me. Well, I can understand they've got to spread out, they've got a sweeper cover, they've got a deep fine leg, deep square leg. They want Imran to take a single and get off strike. They want Ilyas to be there so that they can expose that end. It's just that try something different. Taj Wali is still pretty adamant with that short ball. He feels that he can trap one more, make them play that pull shot, bring in those 2 deep fielders on the onside into play, which is fine. Just try to get someone, especially with the tail enders, a fielder that shot mid-on, mid-off, in your face, for no reason, but just to make your presence felt. And tail enders usually take up those challenges. They'll try to hit you. You should be careful. They might, instead of the ball hit your face. That's the problem with these tail enders. But you're right, as I said, something out of the box. Maybe bring in a non-regular bowler. Who can you think of? Jalad Khan is a regular bowler. I suppose he can be brought back. There could be 1 or 2 others. Imran Farhat can have a go. He can bowl a bit. I don't know why they don't do that. And that is why there have been long tails batting well at times. When the Ashes, Australia started that, I don't know if it was England or Australia, they used to have a fielder right next to the non-striker. Never understood what exactly he's there for, apart from the fact that he's there to just disturb your eye line. Or if you really believe that someone has a very strong bottom hand when he plays straight and he's going to give a catch, but I've hardly seen any catches coming in that position. He was also there to sledge the non-striker, I suppose. What that does is forces the non-striker to get out of the way, and he just starts running away from the pitch, and that disturbs your eye line as a batsman. You want to call for a single or not.
But just those positions, Michael Clark as a captain was like this. He would have a fielder right behind the keeper at the boundary line or right behind the umpire between long on and long off. Just creating those different positions. The batsman's thinking, what am I doing? In fact, that causes problems in the mind of the batsman. He says, what is going on? What is the plan? Oh, fresh batteries, is it? Something went wrong with the walkie-talkie? What have you been doing? Now you got a forward short leg, silly bit off. You got a slip in position. One man less behind the bat. You had 2 slips earlier. Taj Wali, it's a little too deep. He should have stopped that single and stopped Imran from coming to strike. Now he's going to push himself back all the way. If Imran is going to farm the bowling, he should count how many deliveries are left. At the moment, 3 balls left. He might try and get a single on the 5th ball at least. This one is miscued. It's coming down to the deep fine leg boundary. Will it cross it? It does, and that's 4 runs. Yeah, he's got too much of a leg stumpish line continuously. He's trying to fire it into the pads. And that's where he's going to leak runs. That's why he's none for 61 at the moment. He's not a big turner. He relies more on the length and the right areas. Gets the ball to spin enough. Yes, he can induce an edge. But today he's bowling a flatter trajectory and he's bowling into the pads. There, runs available, straightish bat, no spin. Well, his 5 delivery is gone, so if this batsman sees through one more, that's Ilyas, then Imran can get back onto the strike. Well played. End of the over. 64 bowled, 182 for 7. Imran 13 will face the next over, Ilyas 1. You may see a bowling change. That's one move from Imran Farhat. Looks like Umaid Asif coming into the attack. He's going to bowl to Mohammad Imran, who's not out 13. Ilyas is not out 1. And it is Umaid Asif. 2 for 32. He's bowled well. Imran Farhat marshalling the fielders around. Nothing extraordinary. They had 2 slips. He's moved one now onto the onside, going towards the right of your screen towards mid wicket, and then there's a mid on. There is also 2 men in the countryside on the onside, a deep square leg and long leg. The long leg is a boundary rider. Mohammad Imran not out 13. 182 for 7. 65th over coming up. He's having a chat over here in one of the round games with Grant Bradburn, who's the head of the High Performance Centre. He looks over the High Performance Centre coaches as well. And one point he made at the start of the Quaid Azam Trophy is that they want to change the culture of how the longer version of the game is played at the grassroots level or at this level, where they want more result-oriented games. Result, when we say, is a win or loss.
they've done that to a certain extent. 18 matches have been played, 12 of them have win-loss result, 6 have been draw. Very different from last year's Quaid Azam Trophy. And again, I'm harping about the fact that there's more to be done where you see at the highest level or the international level, with the red ball cricket we're talking about. You've got to score 300 in a day. 100 a session, that's so important. Yes, and bowl 90 overs, that is. They have 90 overs, which means 300 is always on the cards. Is the final a 5-day event and the semi-finals? No. No semi-finals. They go Top straight two into the qualify. final. Top 2 go into the finals, which will be a 5-day event. And it will be next year. Long, long way away. Which is about 10 days from now. 12 days. From the 1st of January to the 5th of January. We can see you next year or something like that. Followed by the Pakistan Cup, which will be a one-day tournament. The Pakistan Cricket Board has done a marvelous job. They've got event after event. They've sent out teams. They've hosted teams. What else do you want? It is a difficult situation, particularly under the adverse circumstances they are working in. They sent a team to England, they played a host to a team from Zimbabwe, they've sent squads to New Zealand, and they've arranged all the domestic matches. They've completed the Pakistan Super League and are getting ready for the number 6 edition of the Pakistan Super League. Best of luck to them. It's such an important thing that you've mentioned, which we've also been talking about, apart from getting results and trying to change the brand of cricket. Overrate, so important. You develop this habit of completing the number of overs, you start managing your time as a captain, because you'll be fine and you'll also be having trouble in getting results in your favor. If you're falling behind, you're giving lesser opportunity to your bowlers to get wickets. So you can't slow yourself down. And that's been the problem here in these matches, that they've not been able to finish off the number of overs required to do in a day. It's been a bit casual. They must have been fined for that. No? There's no such thing as there is. End of the over. 183 for 7. Imran 14. Ilyas 1. Come on, Kashif, come on, Kashif! Shabba, Kashif, Bhatti! Kashif, come on, boys! Kashif Bhatti continuing from the University Road end. And it's Imran facing him. Imran not out 14. 183 for 7. We are in the 66th over. Don't think. Square cut, straight to backward point. No change in the field situation. It's the same orthodox field: a slip, a silly mid off, silly mid on, backward point, deep extra cover, and a long off. Easy, Taj. Swept. Shabba boys. They'll settle for 1. Imran goes to 15. The score moves on to 184 for 7. See now, Taj Wali, who just fielded, is coming in for Ilyas.
But to keep him on strike, he's got to come in much closer. Catchy. Azam. He's bowling into the pads, so there's a lot of chance that the ball will go to Taj Wali. And we've seen on a couple of occasions that they managed to cross. If you want to keep Ilyas on strike, you've got to get him, the man behind the square leg umpire, get him closer. Easy. Catchy. 184 for 7. बलोचिस्तान के जो दोनों सीमर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। 5 विकेटें हासिल की हैं, जारहाना अंदाज भी अपनाया है और ज़्यादातर जो रन्स हैं वो स्पिनर के खिलाफ ही बने। अगर शायद तीसरा पेसर होता इस बॉलिंग अटैक में तो ये सूरत हाल और भी मुख्तलिफ होती थी। जल्लाद खान ने 1 विकेट हासिल की, काशिफ ने रन ज़रूर दिए हैं और जल्लाद ने भी, लेकिन अच्छा ये हुआ है बलूचिस्तान के लिए कि कोई पार्टनरशिप देखने में नहीं आई इस पूरी इनिंग्स में। ये देखिए मुसलसल विकेटें गिरती रही हैं, यही वजह है कि बहुत मुश्किल में है सदर्न पंजाब की टीम। मोहम्मद इमरान, इनमें बैटिंग की सलाहियत है। अली यूनुस ने सेंचुरी बनाई है इस सीज़न में, ऑलराउंडर हैं, पेस बॉलिंग करते हैं। इसके अलावा जिस तरह मौका मिला है तो टेल अंडर के साथ ये खेल सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जी हाँ, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं मोहम्मद इमरान, लेकिन शायद यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उमैद आसिफ और ताज वली, दोनों सीमर्स, क्योंकि पिच पे घास मौजूद है। ऑफ द पिच बॉल अच्छा निकल भी रहा है। जैसे भी आपने कहा कि तीसरे सीमर की कमी ज़रूर महसूस हुई होगी बलूचिस्तान को, क्योंकि अगर हम स्पिनर्स की ऑप्शन की बात करें तो काशिफ भट्टी बहुत वेवर्ड रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं अपनी लाइन और लेंथ के साथ। शायद इमरान इसलिए भी फास्ट बॉलर से इस इनिंग्स में ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं। इनका ख्याल हो कि दूसरी इनिंग्स में शायद फास्ट बॉलर की उतनी ज़रूरत ना महसूस हो, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इस पिच पर ज़्यादा विकेटें फास्ट बॉलर ही लेते रहें, खा वो पहली इनिंग्स हो खा मैच की आखिरी इनिंग्स हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही ज़्यादा जिस वजह से हमने ज़्यादा बात की है सुबह से कि तीसरे सीमर, क्योंकि आपने 20 विकेट्स हासिल करनी है मैच जीतने के लिए, और इन कंडीशंस में जहाँ के बॉल ज़्यादा स्पिन भी नहीं होता इन पिचेस पे, सीमर्स को ज़्यादा मदद मिली है। तो एक शायद थोड़ा चूक हो गई इस डिसीजन में बलूचिस्तान की जानिब से, लेकिन अच्छा रह गया है फिर भी दिन। इमरान फरत ने अच्छा लीड किया है अपनी इन 4 बॉलर्स को, अच्छी चेंजेस रही हैं। स्पेशली उमैद आसिफ ने बहुत उम्दा बॉलिंग की है, 34 रन दिए हैं, सिर्फ 17 ओवर कर रहे हैं। और थोड़ी सी मदद उनको बैटिंग साइड ने भी की है, जिस तरीके से विकेट्स लूज़ किए हैं उन्होंने, तो लकी रहे हैं थोड़े बलूचिस्तान और उनके बॉलर्स। यहाँ बहुत मदद की है इनकी बैटिंग ने। अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। शायद बॉलर का उतना कमाल नहीं था, विकेट का भी अमल दखल नहीं था। किसी भी मौके पर
ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इमरान फरद को या उनके बॉलर्स को। हालांकि अगर ये जो साधन पंजाब के बैट्समैन हैं इस बात का एहसास करते कि या इदराक होता कि 2 ही पेस बॉलर हैं, पहले इनको थकाया जाए, और फिर पार्टनरशिप्स अगर होती इस मरहले पर, अगर 2 से 3 विकेटें गिरी होती तो जाहिर है कि बहुत मुश्किल हो जानी थी। जी अगर हम बैटिंग कार्ड पे नज़र मारें तो सिर्फ एक इमरान रफ़ीक की ऐसी विकेट है जो मुझे लगता है कि बॉलर ने खुद विकेट हासिल की है, वो बहुत अच्छी जगह पे गिरा हुआ बॉल था। उसके अलावा तो सब तोहफे ही रहे हैं। ये देखिए इमरान रफ़ीक को जिस तरीके से उमैद आसिफ ने आउट किया था, अच्छा कैच पकड़ा याद तसव्वुर ने, ज़ैन अब्बास ने गलत शॉट मारा, उमर सदीक ने तो बहुत ही ख़राब शॉट खेला, सैफ बदर अनलकी रहे, सलमान का भी गलत शॉट था, उमैर ने गलत तरीके से बॉल को छोड़ दिया। तो सारी विकेट्स में से सिर्फ एक विकेट ऐसा लगता है मुझे जो कल रफ़ीक कहता है जो बॉलर्स ने हासिल किया है, बाकी सब प्लेट में रख के दी हैं विकेट्स। जाने दिया बिस्मिल्लाह खान की जानिब, मोहम्मद इमरान ने 186 पर 7। मोहम्मद इमरान 16 रन पे मौजूद हैं, उनको इस इनिंग को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना होगा कि एक मुश्किल वक्त पे अपनी टीम के लिए बैटिंग कर रहे हैं, अपनी वैल्यू दिखानी होगी टीम के लिए, क्योंकि वैल्यूबल प्लेयर वही होता है जो मुश्किल हालात में रन्स करता है। बड़ा नाम अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे हालात में रन्स करने होंगे। अपॉर्चुनिटी मौजूद है, 3 विकेट्स हासिल हैं, इलियास बैटिंग कर लेते हैं, साथ दे सकते हैं एटलीस्ट इमरान का, लेकिन रन्स लेते रहना होगा। जल्लाद खान ने आज 1 विकेट हासिल की थी जब इन्होंने उमर सिद्दीक को चलता किया, और इनकी खूबी यही है कि गेंद को फ्लाइट करते हैं, हवा देते हैं, और साथ साथ इन द एयर जो हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं है अपने साथी स्पिनर के मुकाबले में। अच्छा कंट्रोल है। अभी ये ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहे थे, सेकंड 11 से आए हैं जल्लाद खान। 9 खिलाड़ी बलोचिस्तान की इस टीम में सेकंड 11 से आए। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सेकंड 11 बलोचिस्तान को कल शिकस्त हुई नॉर्दर्न के हाथों, उसकी क्या वजह थी। लेकिन जो सेकंड 11 के कोचेज़ हैं शोएब खान या हबीब बलोच, उनको भी शाबाश मिलनी चाहिए कि उनकी टीम के 9 खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब हुए सीनियर साइड में। जी हाँ, और बलोचिस्तान के जो पहले खेलने वाले थे क्या वो डिमोटो हैं, तो उनको हम शाबाश देंगे या उनके बारे में कुछ और कहेंगे? बैट बॉल लगी, लेग स्टंप को मिस कर रही थी, यही ख्याल है अंपायर का। काफी वाइड था क्रीज जाकर फेंकी थी, लेग स्टंप की तरफ निकल जाती। कदमों का इस्तेमाल किया है, हवा में बॉल, फील्डर नीचे हैं, कैच आउट हो जाएंगे, और आसानी से कैच पकड़ लिया अयाज तसव्वुर ने, और एक और विकेट, एक और तोहफा सदर्न पंजाब की जानिब से बलोचिस्तान को। जी हाँ, जल्लाद खान ने दूसरी कामयाबी हासिल की, और काफ़ी देर से इलियास रुक कर बैटिंग कर रहे थे। 28 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाए, और उसके बाद उन्होंने शॉट जो है उधर खेलने की कोशिश की, गेंद उधर चली गई, और अच्छा कैच लिया अयाज तसव्वुर ने, जिन्होंने आज सुबह के वक्त एक स्लिप कैच गिराया था। इलियास गए 2 पर, 186 पर 8।
एक सिला हो गया, जाहिद महमूद हवाए हैं बैटिंग करने। 46वां मैच खेल रहे हैं, 484 रन बना चुके हैं, 11 रन की एवरेज है, 250 बना चुके हैं। कुछ खास है नहीं है बैटिंग में यहाँ पेश करने के लिए, सिर्फ साथ देना होगा यहाँ पे ठीक है इमरान का। और इस तरीके से एक और खराब शॉट। पीछे रन अली भाई, क्या जरूरत है ऐसी शॉट मारने की जब आपकी टीम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। एक बेहतर बैट्समैन आपकी दूसरे एंड पे खड़ा है, आपको तो सिर्फ साथ देना है उनका। अप्रोच की समझ नहीं आई है मुझे आज सदर्न पंजाब की जानिब से। मुश्किल पिच पे बैटिंग की है आपने और विकेट्स गवाते रहे हैं। काशिफ भट्टी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा रन्स ना उनके एंड से कंसीड हों। देखिए मोहम्मद इमरान को ये 1 रन देने पर आबादा यहाँ पर दूसरा रन भी बन जाएगा। ऑफ साइड स्वीपर जो हैं वो पॉइंट के खासी हद तक सामने थे। शायद वक्त आ गया है कि मोहम्मद इमरान को अब अपना गियर तब्दील करना होगा, क्योंकि एक तो जो दूसरी नई गेंद है उसके आने में भी ज़्यादा वक्त नहीं बचा और फिर वैसे भी 2 विकेटें बची हैं। तो यहाँ रन्स बनाए बगैर बैट करी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि जो खिलाड़ी पहले खेल रहे थे उनका क्या हुआ बलोचिस्तान के लिए। तो अगर हम सिर्फ इनके ओपनर की बात करें समी असलम की, तो वो 7 समंदर पार चले गए। वो अंकल साम के देश चले गए इस क्रिकेट को अलविदा कह के। जी हाँ, डिबेटेबल डिसीजन है समी असलम की जानिब से। बहुत यंग क्रिकेटर हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार गए, क्योंकि इस सिस्टम में तो लोग बूढ़े हो जाते हैं। ताबिश खान की एग्जांपल है हमारे सामने, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, कब से अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, और आप तो 24 साल में हिम्मत हार गए। तो डिबेटेबल डिसीजन ज़रूर है। फील्डर ऊपर बुला लिया है मिड विकेट का, शायद उस सिंगल को रोकने के लिए जो अब इमरान जिसकी तलाश में होंगे। और ज़ोरदार हिट लगाई, इस बार शानदार शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। पहला छक्का लगाया मोहम्मद इमरान ने, इसी की ज़रूरत भी है। विकेटें गिर रही, देखिए फ्लैट गेंद थी, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। स्लॉग स्वीप किया और गेंद हवा से बातें करती हुई आई माजिद खान इंक्लोजर के सामने। जी हाँ, बड़ी हिट मारने के माहिर हैं मोहम्मद इमरान, T20 स्पेशलिस्ट क्रिकेटर हैं ये। ऐसे तो उनको बहुत मौका मिल जाएगा जब आप 5वें बॉल पे सारे फील्डर्स अंदर ले आएंगे। इस शॉट को आराम से दे मारा उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से। पुल किया लेकिन सीधा हाथों में, और कोई गलती नहीं की यहाँ पर ताज वली ने। अब सिर्फ जो है नदामत है, और एक और ख़राब शॉट, और इस तरह पिछले 2 ओवर्स में 2 विकेटें गिर गई। इमरान भी बहुत देर से विकेट पर मौजूद थे, लेकिन मुसलसल दूसरा शॉट खेलना खासा महंगा पड़ा। जहाँ आगे पिच हुआ बॉल था जिसे ज़बरदस्ती पिछले पाँव पे खेलने चले गए थे इमरान। 24 रन बना सके 46 बॉलों पे। ताज वली ने कैच पकड़ा काशिफ भट्टी की बॉल पे, तो अब 194 पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए हैं सदन के। यार क्या हो गया एकदम। मैडी पीछे से कौन जाएगा? जजे मिड विकेट। जलाद खान अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे।
तो अब ख्वाहिश होगी इमरान फरद की कि जल्द से जल्द इस इनिंग को निपटाया जाए ताकि मैक्सिमम बैटिंग कर सकें आज के दिन, क्योंकि आखिरी घंटा बहुत डाइसी होता है बॉलिंग बैटिंग साइड के लिए। पिछले मैच में भी हमने देखा कि आखिरी पैर बहुत विकेट्स गिरी हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है बलूचिस्तान की जानिब से और उतनी ही ख़राब परफॉर्मेंस सदर्न के लिए। टॉस जीत के जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आप एक प्लान और एक स्ट्रेटजी के साथ बैटिंग करते हैं पहले, ऐसी पिच पे स्पेशली, लेकिन कोई प्लान कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आई है आज, क्योंकि पहला जो घंटा था मुश्किल होता है इस पिच पे वो आपने निकाल लिया। बहुत अच्छी बैटिंग की शुरू में ओपनर्स ने, लेकिन उस मुश्किल वक्त गुजर जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी इनिंग को लेके चले हैं हैरान कुन है। और हवा में खेला, महफूज शॉट था जाहिद का, 4 रन्स। इन दोनों बैट्समैन के पास शायद इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। देखिए जाहिद जो हैं एक ही तरीके से स्ट्रोक खेलते हुए नजर आएंगे। मिड ऑन की फील्डर को क्लियर किया। जाहिद के साथ ज़ियाउल हक हैं, ये फास्ट बॉलर की काफ़ी निस्बत है साथी कमेंटेटर के साथ। अली यूनुस के शहर से हैं ज़ियाउल हक। ये कैसी बैटिंग कर सकते हैं अली? शुक्र कीजिए नंबर्स नहीं नजर आ रहे हैं उनके अभी, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। इसे कट कर दिया थर्डमैन की जानिब, फील्डर पीछे है, 2 रन यकीनन बनेंगे। 200 रन इस तरीके से सदर्न पंजाब ने अपने मुकम्मल कर लिए। यार इसके लिए बहुत तागतौ करना पड़ी है। एक मरहले पर इनका स्कोर 61 था और एक खिलाड़ी आउट था। उसके बाद से विकेटें मुसलसल गिरती रही हैं, कोई भी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिल सकी। जिम्मेदारी से इस गेम को खेला जाहिद ने। बहुत ज़्यादा सोच विचार करना भी नहीं पड़ी इमरान फरद को, ना उन्हें किसी किस्म के दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि मुखालिफ टीम बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। उन्होंने सिर्फ यही कोशिश की कि एक तरफ फील्ड रख के बॉलिंग की जाए। यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई। दूसरे रन के लिए पहुँच जाएंगे अपनी क्रीज में अली वकास से। इसके साथ ही 70 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 202 पर 9। ये हाल देख सकते हैं सदर्न पंजाब की बैटिंग का। 50 रन बनाए सलमान अली आगा ने, लेकिन शॉट सिलेक्शन उनकी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जैन अब्बास भी सेट होकर आउट हुए। ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो पिच पर वक्त गुजारने के बाद आउट हुए। ये ज़ियाउल हक का जो बेहतरीन स्कोर है ये 30 है। तो अली यूनुस जिक्र हो रहा था ज़ियाउल हक और आपके शहर बिहाड़ी का, वहाँ पर क्रिकेट का क्या आलम है, क्या सरगर्मियाँ हैं क्रिकेट की, आना जाना रहता है आपका वहाँ? इसे गैप में खेल दिया है, 4 रन मिलेंगे। शायद उनको मालूम है कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ तो मुझे खुश करने के चक्कर में रन आने चाहिए। अच्छी शॉट, ना करीब नहीं था बॉल, स्ट्रेच करके गैप में शॉट मारने में कामयाब हुए हैं ज़्यादा। जी हाँ, बिहाड़ी की अगर हम बात करें तो बहुत टैलेंट मौजूद है उस सारे रीजन में, लेकिन सामा वो सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में जैसे हमने देखा वहाँ पे जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन रही, प्लेयर्स बहुत ही चेंज हुए। शायद यहाँ पे चूक हो गई है, क्रिकेट बोर्ड में ज़्यादा नज़र नहीं रखी है वहाँ पे जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट संभाली गई है। इसे स्वीप कर दिया, फाइन खेले।
2 रन तो कम से कम बनेंगे और अगर अच्छे तरीके से भागें तो 3 भी बन सकते हैं। मना कर दिया एंड पे। दोनों एंड पर इस वक्त स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। ज़ाउल हक के लिए अयाज तसव्वुर को मिड विकेट की बाउंड्री पर भेज दिया गया। एक फील्डर को स्क्वायर बाउंड्री पर खड़ा किया गया है स्क्वायर के पीछे और फ्लाइटेड गेंद थी। टर्न देखने में आई, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा काशिफ भट्टी की जानिब से। 208 पर 9। तीन खिलाड़ियों को आउट किया ताज वली ने और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा उनकी जानिब से देखने में आया। उमैद आसिफ ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया है उनका और जल्लाद खान के पास यहाँ मौका है तीसरी विकेट हासिल करने का। और जो पहली इनिंग्स का इस कायदे आज़म ट्रॉफी में यानी 2020 के टूर्नामेंट में जो औसत स्कोर है वो 308 रहा है। तो ये 208 पर 9 खिलाड़ी आउट हैं सदर्न पंजाब के। तकरीबन 100 रन अभी पीछे हैं ये औसत स्कोर से। तो इससे उनकी बैटिंग की बदहाली का हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फील्डर हैं पीछे लेकिन गेंद ताज वली से दूर गिरी। तो आज इन्होंने टीम से बाहर करने का फैसला किया था ज़ीशान अशरफ को, ओपनिंग बैट्समैन को। हालांकि ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं थे लेकिन हर एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाया गया। मोहम्मद उमैर को पहली बार फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई गई और रात नहीं आई उनको। राउंड द विकेट ताज वली बॉलिंग कर रहे थे, लेफ्ट आर्म सीमर, उन्होंने गेम को लीव कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ही मिस जज कर गए लाइन को। प्रेशर होता है पहले मैच का, जब आप टेलीवाइज हो रहा हो मैच, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो एक यंगस्टर के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। टैलेंटेड हो गए तभी इस फर्स्ट 11 में आए हैं और मैच खेल रहे हैं। ज़ीशान अशरफ एक और बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। और ये गेंद स्लॉट में थी और जोरदार हिट लगा दी और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के फिर बाहर पहुंचा दिया है। ये दूसरा शानदार छक्का जाहिद महमूद का। ये देखिए, ये शॉट खेलना इनको पसंद है। या किसी भी टेल एंडर को अगर आप यहाँ बॉल करेंगे तो उनकी तो फेवरेट एरिया हो जाता है ये। बहुत आसानी से उसको मिड विकेट की जानिब छक्के के लिए दे हमारा। 216 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अब से सदर्न पंजाब के। और एक अच्छी छोटी सी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है जाहिद महमूद और ज़ियाउल हक की जानिब से। बाउंड्रीज पिछले 2 ओवर्स में काफ़ी लग गई हैं, इसका नेचुरली फ़ायदा होगा सदर्न को, क्योंकि ऊपर वाले बैट्समैन तो कुछ खास कारकर्दगी दिखा नहीं सके। सैफ बदर, सलमान अली आगा, इमरान रफ़ीक, ज़ैन अब्बास, उमर सिद्दीक, सब बहुत अच्छी फॉर्म में अच्छे रन्स करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज डिसअपॉइंटमेंट ही रही है इनकी बैटिंग की जानिब से। कुछ ऐसा नहीं था कि बॉलर साइड ने बहुत मुश्किल बॉलिंग की हो या बहुत विकेट टेकिंग डिलीवरीज की गई हो। समा बहुत ही अजीब सी अप्रोच रही है सदर्न की जानिब से। इसमें सलमान अली आगा सेट हो गए, 50 रन अच्छे तरीके से मुकम्मल किए। कंसंट्रेशन लूज कर बैठे वो। इमरान फरहत को अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर घी सीधी उंगली से नहीं निकल पा रहा, तो फास्ट बॉलर को लाया जाए। 2 टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं। तो वापस आते हैं सदर्न पंजाब की बैटिंग कारकर्दगी की जानिब।
जो मकामी खिलाड़ी थे सदर्न पंजाब के इस टीम में, जैन अब्बास, इमरान रफ़ीक और फिर मोहम्मद उमैर, जिनका पहला मैच था 12 रन बना सके वो। तो पहले जो सदर्न पंजाब से बड़े अग्रेसिव बैट्समैन होते थे, मंजूर इलाही, ज़हूर इलाही, सलीम इलाही, इंज़िमामुल हक, अब वैसे खिलाड़ी नहीं आ रहे। वो अग्रेशन नज़र नहीं आता इनके जो मकामी क्रिकेटर्स हैं, मकामी बैट्समैन उनमें। जी हाँ, टैलेंट तो बहुत 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 मौजूद है उस एरिया में, बट समहाउ इस बॉल के बाद बात करेंगे। लेकिन पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की वजह से डिसअपॉइंटिंग हो गए हैं लड़कों के लिए। क्रिकेट खेलना छोड़ गए हैं क्योंकि सही तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहे हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा आखिरी 2 साल पहले वहाँ से खेला था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बहुत ख़राबियाँ हैं वहाँ पे, बहुत गलतियाँ हैं। तो जिस वजह से जो डिज़र्विंग लड़के होते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है वो क्रिकेट छोड़ जाते हैं। और मुझे भी बहुत दफ़ा, बहुत अभी भी अगर मैं अपने फ़ोन दिखाऊं तो बहुत लोगों के मैसेजेस हैं कि किसी तरीके से यूएस की तरफ हम भी चले जाएं। तो लोगों का जो एतबार है वो उठ गया है उस सिस्टम पे, वहाँ जो जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते थे, शौक से क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया है पिछले 4-5 साल की अगर मैं बात करूँ तो। ये अभी कुछ अर्सा पहले एक नाम जो है हमने सुना था यूसुफ बाबर का, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे इसी इलाके से, जहाँ पाकिस्तान अंडर-19 के लिए भी खेले थे, फिर उसके बाद भी 1-2 सीरीज़ में नज़र आए। ज़ाहिर है कि सेकंड 11 तक उनकी भी कोई खबर नहीं। और इसके अलावा ये मकबूल अहमद जो इनके विकेट कीपर हैं, इनको मौका दिया जा सकता था, ये अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। पिछले साल इन्होंने सेकंड 11 क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, इस सीज़न में एक ही मैच खेल सकें। जी, बहुत ज़रूरी होता है कि छोटे इलाके से अगर आप प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उससे और लड़कों में बहुत उमंग पैदा हो जाती है। गैप में चला गया बॉल, 4 रन की तरफ बॉल जा रहा है, थोड़ा तेज भागना होगा। बहुत ही लेजी अप्रोच रही है यहाँ फील्डर की। शुक्र करें कि बाउंड्री को टच नहीं किया बॉल ने। ये अली वकास से, जो कि छोड़ दे आसिफ भाई, फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद फर्स्ट क्लास सीज़न खेल रहे हैं, वापसी उनकी हो रही है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता गए थे, उसके बाद गेंद के पीछे धकेलने में कामयाब हुए, बाउंड्री उन्होंने ज़रूर बचाई। लेकिन ये बहुत कीमती रन्स हैं। इस आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में अब तक 23 गेंदों में 27 रन्स का इजाफा किया है ज़ियाउल हक और जाहिद ने। 194 पर नवी विकेट गिरी थी। तो ये रन्स जो हैं इमरान फरहत को इन्होंने सोचने पर मजबूर किया है। फिर खेल दिया थर्ड मैन की जानिब, गेंद इकलौती स्लिप और गली के दरमियान से निकल गई। एक और बाउंड्री मिली। बड़ी अच्छी बैटिंग जाहिद महमूद की, जो अपनी लेग स्पिन बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। 225, 9 खिलाड़ी आउट और फोर्थ अंपायर गिलानी आ रहे हैं मैदान पर। पानी का वक्फा हुआ चाहता है।
2-5 for 9. And this last wicket has been a bit frustrating for the Balochistan bowler. That's the 2 boundaries. The over before the drinks break. Just opening the face and just running it down using the base. So the last wicket fell at 194. And these two have put in 31 runs together in just 24 deliveries. Tailenders are wagging. Not only have they edged and scratched, but they've played some authentic shots, including few towering sixers. 30 plus runs have been added for the final wicket. 2-6 for 9. Ziaul Haq not out 10 and Zahid Mahmood not out 21. He's been the main aggressor. Zahid Mahmood struck a couple of sixers, edged a few. Ziaul Haq has joined in. Jalad Khan got a wicket thanks to the indiscretion of the Southern Punjab batsman. Out he comes and up she goes, and that's 6 more runs. Dance down the pitch and bang right in the middle of the bat, over almost near the side screen at the University Road end for another half a dozen. 38 runs of 27 balls for the final wicket. 232 for 9. That's a clean hit, as if the spinner knows the other spinner very well. As if he's reading it out of his hand. He's concentrating on the revolutions of the ball. It's just everything is perfect. It's like a proper batsman's shot, just coming down to the pitch of the ball and hitting it over the head. How about that? Improvisation. They've got the license to express themselves. Your captain tells you, anyway, in trouble with scores, so if you can add some in your own way, why not? 40 added by these two. That's a typical white ball format shot.
been very popular these days, particularly in the white ball game. He's wanting to do it again. Obviously, he isn't very experienced at that, but who cares? He's got a couple of more runs. 236 for now. Yeah, big over this. I think Jallat is getting a bit predictable for the batsman. He's not offering any turn. So he's allowing Zahid to just play him over the keeper at will. Good wristy shot that. No run. 236 for 9. A bit of frustration has set into the attitude of Imran Farhat. He's a bit cheesed off with his bowlers. Spoken to them a few times, particularly to the Jalad Khan. But Ziaul Haq and Zahid Mahmood in particular have done a lot of damage. 236 for 9. Here is Taj Wali. And Ziaul Haq will give the strike to Zahid Mahmood after getting a single. 237 for 9. The highest scorer in the batting card is Salman Agha, 50. Then Zain Abbas, 40. And now it's Zahid Mahmood, 31. Yes, 50 for Salman Ali Agha, 40 for Zain Abbas. And the third highest is Zahid Mahmood, who is on display at the moment. Ziaul Haq is with him, not out, 11. 75th over is coming up. Ziaul Haq eager to get a single, get to the other end, but he vociferously sent back. And get this, Zain Abbas got 40 runs of 81 balls. And Zahid gets 31 of 22. You might argue that Zain was facing a new ball, conditions were tough, but this is the tail end. So it's just the approach towards the game. It's a very authentic shot of his hips down towards square leg and gets a single. 238 for 9 now. Zahid Mahmood not out, 32. Ziaul Haq, he's the opening bowler, the tall left arm opening bowler. No real change in the field, it's orthodox. 2 slips a gully. In the other 2 games, KP versus Sindh, toss was uncontested. KP chose to bowl first, and Sindh in their first innings drinks after tea. 215 for 6. Asad Shafiq 60. Irfanullah 3 for 30. Sajid Khan 2 for 59. The UBL ground, Northern versus Central Punjab. Northern has a very, very strong and long batting line. They're all out for 243. Asif Ali gets 72 not out. Hassan Ali from Central Punjab 4 for 48. Rawal Iqbal 3 for 91, and this one's in the air. Might not go to a fielder,
but will award them runs for sure. Coming back for 2. Azam fields, and 2 more added to the total. So Northern has been wrapped up for 243. Who knew that Southern Punjab will get to near to 250 after the performance they gave. They were 194 for 9. This last wicket has put up 46 runs. And Sindh, they're also struggling a bit, 215 for 6. Against Northern, Hassan Ali got 4. The current partnership is worth 46 runs and 36 deliveries. Ziaul Haq 13 not out, and Zahid Mahmood 32 not out. Here's Kashif Bhatti, and here is the reverse sweep, and it's going to be another boundary, is it? No, it's slowing down, will be cut off. That was once again a white ball format shot. These are becoming popular now. But that's it. It doesn't matter how they come, as long as they come. Yep, Zahid showing no love to the left arm spin attack. First Jalat, now Kashif. Look at that. He's got a fielder protection there at long off. He's still trying to play wide of him with an open face, like a sort of an inside-out shot. Putting up a strong case to his captain, should be up in the order. That's it, is it? Bismillah Khan probably missing a chance there. Let's have another look. There it is, he came out. Oh yes, had Bismillah collected that, that would have been bye-bye birdie for the batsman, and it would have been the end of the innings. Appeal for LBW disallowed. No real confidence in that appeal, no conviction. Ziaul Haq is 13 not out. He has another couple of deliveries to see off. .243 for 9, with an opportunity gone begging. 76 overs bowled. It should have been curtains. Never look at that. Completely missed that, Zahid. What Bismillah is trying to do is, in one motion, trying to slap the ball back onto the stumps. Hadn't collected it in first place. A quicker one as well from Kashif. Sort of late in getting his glove behind the line of the ball as well. .49 this partnership now of just 42. Imagine if they wrapped it up, they were 194 for 9. It's 4:15 in the afternoon here in Karachi. The shadows are lengthening as the sun goes down towards the west. The shades from the stadium coming on to the ground now. It's about 1/3 covered. The sun's still bright, and it's Taj Valley trying to get rid of this menace. Ziaul Haq or Zahid Mahmood. Couple of middlesome tailenders from the point of view of the Balochistan side. 243 for 9. Oh, bounces him. Zahid quite up to it. Zahid has a couple of 50s in this part, in this type of the game. He's trying to slice it over third man, I think.
Now I think Tajwali is getting frustrated. He's bouncing one outside the leg stump. I think what you should do with tailenders, with Ziaul Haq and Zahid as well, is to a certain level of venom into it, and especially Zahid Mahmood seems to be in no sort of trouble, and he's doing bulk of the facing. 51 this partnership now of 46. Yes, the score is not huge, 245, but whatever runs are being added here are hurting the bowling side. All your hard work is undone when you feel you got 9 wickets and you haven't allowed anybody to stick around for a longer time. This partnership just proves it completely different. If you look at the partnerships throughout the innings, we haven't had much to talk about, 75 being the highest partnership. And then there was one right on the top of 40 runs. This one is the second highest and still going on, 51, and the number of deliveries faced in that is much lesser. It's not even a run-a-ball partnership, it's more than that in the favor of the batting side. It's really ordinary from the bowling unit. 246 for 9. Chalo boys, Sabah boys, come on Kashif. Kashif shall continue from the far end with Zahid on strike. Some more for Abbots. Take edge, more runs. Surely Balochistan is leaking runs here. They've got to come out with a plan. The important part in this partnership is that without, I don't know if the bowling side has noticed it, Zahid is just keeping straight. I haven't seen Ziaul Haq on strike for a long time. They're just unable to keep him off strike. Can't make up their minds whether to attack Zahid or Zia. Once again, you see that Imran Farhad is doing all the orthodox things. He's got the same bowling, he's got a pace bowler, spinner at one end, and he's got the field spread out. Let's say, why doesn't he attack? That's the point, he's put the fielding sab on the defensive. Zahid Mahmood's hits. You've got a spread out field, 3 men patrolling the onside boundary, 2 the offside boundary. Just that one slip in catching position. Look at that, he just plays with soft hands, gets a single on the 5th delivery. He'll keep strike. He'll just allow Zia to face one ball. Why can't you bring your field in to bring Zia on strike on the next over? That's the field you just saw. It's all spread out. Look at these on the onside. Everyone in the deep. And Zia will just block this. It doesn't take rocket science to figure this. Zahid Mahmood will keep strike now in the next over. So he faces the whole over, allows Zia to face one. I don't know why not many were interested in that shot. Was there an inside edge? Tough to say. Looked pretty adjacent. Well, a replay will tell us what it was all about. Let's get a replay of that. That is it, down the wicket, tossed up, forward. I think there may have been an inside edge. Yeah, it's tough to say because the bat is covering the line of the ball, but if there was no inside edge, that was crashing into middle stump.
So now, Imran Farhat with Taj Wali. What is he trying to do here against Zahid Mahmood? He's bringing in a fielder at short mid-wicket. He's got first slip, he's got a gully. The rest is all regulation. Zahid Mahmood is batting very competently. His senior colleagues in the batting department should take a few lessons from this young man. He's done a marvellous job for southern Punjab. 249 for 9. At one time it looked that they would be all out for 170 or so. He's trying to bounce him out. That's what Zahid is saying. What are you trying to do? That's the 50 partnership being shown. How they got it. A lot of sixers. 3 of them. And a few nudges. A few cuts. This was one of the sixers by Zahid. He's played extremely well. Once again, Taj Wali trying to intimidate him. Zahid is a fearless character. 41 not out, 249 for 9. Sharp and quick. I don't know that if Zahid is really going to take him on with that pull shot. I'd rather go with that idea of yours. Aim for the stumps. All said and done, you're bowling to a number 10 batsman. Yes, in fact, Ray Lindwall, the famous Australian fast bowler, had a theory. Rattle the nerves of the batsman with a couple of bouncers and rattle his stumps with a third yorker. And he had a ferocious bouncer and an equally ferocious yorker. What on earth is going on? Seems we are watching a 2020 match. .249 for 9. Southern Punjab. Tries to cut that, tried to find the gap between gully and squarish point. Played it straight out. 79 overs bowled, 249 for 9. And now it will be Ziaul Haq to face. There's a new ball which will become due after the next over. That's always been my question. So what happens once they take the new ball and they get the wicket on the second one? Just a ball or two old. What happens to this ball? Yeah, I know, 2 balls old, new ball. That's a rare one. Yeah. You can buy it if you want. I'm sure they use it for other purposes in the nets, or just put a small marking of how old the ball is. Yeah, it can be a replacement ball, you see. Okay, let me decide this over. So if Ziaul Haq is in strike, try to get your fielders as close as possible to keep him on strike. He shouldn't be taking a single. Make sure he faces 6 deliveries. That's to start with. No, no.
The No, wrist. he won't face 6, he'll face... and that's 250 on the board now for Southern Punjab. 251. Zia is gaining in confidence. I mean, Zahid didn't stop him from taking the second run. He said, let's go, take 2. Now is the single. So it's Zahid Mahmood on strike now. 252 for 9. So the first shot is a nice wristy shot on the vacant area on the onside. 2 runs. And then he slog sweeps 1 for a single. Brings Zahid Mahmood back on strike. So not only is off strike, he's added 3 runs. Also the question is, should they take the new ball? I don't see why they shouldn't, because this is not working. That may not work either. The way they're going. The reverse sweep once again. Good. You will be considered for the 2020 Pakistan side. That's why he's becoming quite good at it. I would be upset with myself if I was the bowler here. If the tail end is going to hit me like that, got to really figure out what I'm doing wrong here. He's got a wicket, but 90 runs is what he's given away. He's in his 28th over. Very delectably cut. I thought that was a very good shot. Although it didn't get him any runs, that was a perfect, nice late cut. The old-fashioned late cut. Out he comes. That should be out. That should be out. Thank you very much. Thank you for coming. You've been a nuisance, but anyway, it was nice knowing you. And that is 256 all out, and I'm sorry, Sikandar, that your question will remain unanswered. The second new ball will not be taken. Yeah, they've done the job. I think it was a bit deliberate. You're watching the feet where the batsman is going, and you bowl a quicker, wider one outside the off stump to beat him. That's clever, cleverly done. That was a bit late in the day, isn't it? They could have used this tactic earlier on. But anyway, they've played well. Zahid Mahmood, the last batsman out, stumped Bismillah, bowled Kashif Bhatti for 45. He's played well, well played. Well played Southern Punjab, 256. They have played against heavy odds, and they've got to a total which I can't say is really very respectable, but it's not too bad. 45 of 45 for Zahid Mahmood. It's very well played. His team is very happy with him. They've taken their side from 194 for 9 to 256 all out in the 79.5 overs faced. And Zahid becomes the second highest scorer in this batting card. The partnerships again, that's the second highest partnership, 62 of 65. Ziaulak and Zahid. So the damage in the end, if not too much, it has been. There's a bit of a dent in the Balochistan plans. 3 wickets for Wali. Leading the attack, Umaid gets 2, so does Kashif and Jalal. Join us after the break when Balochistan comes out with their reply to their first innings.
वेलकम बैक नेशनल स्टेडियम कराची में सदर्न पंजाब की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 256 रन बना सकी और मिस सेंचुरी बनाई सलमान अली आगा ने। उनके अलावा 40 रन की इनिंग्स खेली जैन ने और नंबर 10 पर आकर जाहिद महमूद ने अच्छा हाथ दिखाया। 100 के स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाए। देखिए पार्टनरशिप ज़्यादा देखने में नहीं आई। सैफ और सलमान के दरमियान 75 रन बने और जो दूसरी बड़ी पार्टनरशिप थी वो ज़ियाउल हक और जाहिद की थी आखिरी विकेट के लिए 62 रन की और दोनों ने अपनी टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। सलमान अली आगा ने आज अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, ख़ासतौर पर जो उनके लेट कट थे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ वो बड़े काबिल दीद थे और स्पिनर्स पर खासे हावी हो गए थे शुरू से ही। देखिए मैदान के चारों जानिब स्पिनर्स पर स्ट्रोक खेलते हुए नज़र आए, ऑन साइड में भी ऑफ साइड में भी। ये शॉट ख़ास तौर पर इनके लिए खासा प्रोडक्टिव साबित हुआ और इन्होंने टूर्नामेंट में एक और मिस सेंचुरी स्कोर की। जाहिद महमूद दूसरे टॉप स्कोरर हैं। अच्छी बैटिंग की क्योंकि जिस वक्त खेलने के लिए आए थे 9 विकेटें गिर गई थी, रन अभी 200 भी नहीं थे। ये जैन अब्बास की 40 रन की इनिंग्स है लेफ्ट हैंडर की। अच्छे खेल का उन्होंने मुजाहरा किया। ये देखिए ओवर द टॉप भी खेलते रहे, जहाँ जहाँ मौका मिला विद द स्पिन स्वीप करने से भी बिल्कुल नहीं घबराए। लगता था कि बड़ी इनिंग्स खेलने के मूड में हैं लेकिन फिर वो आउट हुए। वली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 2-2 खिलाड़ियों को मैद, काशिफ और जल्लाद ने आउट किया। तो इस तरह बलूचिस्तान की टीम पहले 256 रन जो है पे आउट कर लिया और ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अगर हम लास्ट विकेट ये कैच ये देखें, पहला जो आउट हुआ था उससे पहले यहाँ ड्रॉप भी किया था कैच और ये जिस तरह की हिट लगाई थी बहुत ही दूर से, लेकिन बॉल को जगह दी और ये जिस तरह बॉल अच्छा बॉल हुआ था वली का ग्लव्सों को लेता हुआ विकेट कीपर के हाथों में, तीसरा नुकसान। और ये अनलकी रहे यहाँ पर आगा, लेग स्टंप पे बॉल था और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और ये जो रन आउट हुए ये भी सहब बदल अनलकी। यहाँ पर इस तरह के रन आउट जो हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट होते हैं और ये लेफ्ट कर दी थी बॉल, बोल्ड हो गए ऑफ स्टंप के बाहर क्योंकि बड़ा अच्छा गेंद ताजवली का अंदर आया था, ये किया था अच्छा कैच स्क्वायर लेग के ऊपर बाउंसर पे बैट के ऊपर लगा था बॉल और फील्डर ने थोड़ा सा अपने दाएं जाने भागते हुए इस कैच को लिया था और ये बड़ी हिट लगाने गए थे, आउटर एज हुआ था पॉइंट पे, फील्डर ने कैच कर लिया, हल्का सा गेंद टर्न हुआ था जिसकी वजह से गेंद पॉइंट की तरफ गया। ये पुल करने गए थे लेकिन सीधा ऑन के फील्डर के पास, थोड़ा तेज आया बॉल सीधा मिड ऑन के फील्डर के पास, आसान सा कैच और ये स्टंप बहुत वाइड कर दिया था बॉल। काशिफ ने पहले से निकल गए थे आगे तो बॉलर ने देख लिया था, इस तरह ये विकेट्स गिरे थे। ताजवली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उमैद, काशिफ और जल्लाद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो अभी आज के दिन में 8 ओवर्स का खेल बाकी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल स्टेडियम में आज पहले दिन पूरे ओवर्स का खेल मुमकिन हो सकेगा क्योंकि ओवर रेट आज खासी बेहतर थी। स्पिनर्स भी मुसलसल बॉलिंग करते रहे, फास्ट बॉलर भी बहुत जल्दी वापस अपने बॉलिंग के निशान पर जा रहे थे। तो बलोचिस्तान के दोनों ओपनर्स मैदान में इस वक्त दाखिल हुआ चाहते हैं। इमरान फरहत जो टीम की कप्तानी कर रहे हैं और उनके साथ अजीम घुमन, ये पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन है, दाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। अच्छी फॉर्म दिखाई है अजीम घुमन ने, सीनियर और जूनियर्स दोनों की जानिब से खेलते हुए। ये अजीम घुमन है। इमरान फरहत जो हैं वो इस वक्त बॉलिंग एंड पर हैं। अजीम घुमन की जब
वापसी हुई फर्स्ट क्लास सर्किट में इस साल, तो दोनों इनिंग्स में ये नर्वस 90s का शिकार हुए थे। 5000 रन्स पहले ही बना चुके हैं, 30 की औसत है जिससे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छे बैट्समैन हैं अजीम घुमन, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, और इमरान फरहत ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, काफ़ी टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। यहीं पर इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, आपको याद होगा, इसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ बलोचिस्तान के लिए खेलते हुए अब से चंद हफ्ते पहले। इससे खुशगवार यादें हैं इनकी। तो आमिर यामीन जा रहे हैं पवेलियन एंड से। मोमेंट देखने को मिली, तो 8 ओवर्स में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस नई गेंद को सी ऑफ किया जाए, क्योंकि शाम के वक्त हम देखते हैं सुबह की तरह कि बॉलर को मदद मिलती है नेशनल स्टेडियम में। जहाँ ये टाइम भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा नर्वस होता है बैट्समैन के लिए, ख़त्म हो रहा होता है टाइम, और बैट्समैन चाहता है कि मैं इनिंग को स्टार्ट करूँ मॉर्निंग में। सो इस वक्त प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन समटाइम्स में रन्स भी आपको मिलते हैं। सिर्फ 3 स्लिप 1 गली पॉइंट कवर्स के साथ आमिर यामीन ऑफ स्टंप से हल्का सा बाहर, हल्का अंदर आया, बैकफुट पे कवर करते हुए उसको खेला अजीम घुमन ने। ऑन पे 3 फील्डर हैं, लॉन्ग लेग और शॉर्ट लेग लिया हुआ है, क्योंकि आमिर यामीन का अच्छा अंदर आता है बॉल, इन स्विंग जिसे करते हैं तो उसमें बहुत चांसेस होता है शॉर्ट लेग पे जाने का, तो कप्तान ने शॉर्ट लेग लिया हुआ है। ये पहले आउट स्विंग भी अच्छा करते थे, लेकिन इस सीज़न में हम यही देख रहे हैं कि ज़्यादा इन स्विंग कर रहे हैं नई गेंद के साथ आमिर यामीन। 3 स्लिप से गली पॉइंट मिड ऑफ साइड में। इस बार फिर इन स्विंग थी, इसे बहुत फाइन खेलने में कामयाब हुए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, लेग बाई का चौका यहाँ पर बलोचिस्तान की टीम को मिला, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। मिडिल लेग स्टंप पे गिरा था बॉल, फिनिश कर रहा था, लेग स्टंप पे जाके अंदर आता हुआ बॉल स्पैट पे लगने के बाद फाइन लेग बाउंड्री पे 4 रन। तो इस तरह बलूचिस्तान की इनिंग का आगाज, 4 लेग 22 के रन। वैसा जो सेकंड 11 में अजीम घुमन के पार्टनर थे, पिछले मैच में उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया था, उनके साथ इस बार इमरान फरहत की वापसी हुई है, तो वो ओपनिंग करने के लिए आए हैं। इस तरह राइट लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो बरकरार रखा है बलोचिस्तान ने। इमरान फरहत बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर, 228 फर्स्ट क्लास मैचेस, 38 सेंचुरियाँ, 17 सेंचुरियाँ, 15,000 के करीब रन, एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त, एज ए ओपनर तो बहुत ही ज़बरदस्त। बड़ी जोरदार अपील हुई है यहाँ पर, और एम्पायर एहसन रजा ने आउट करार दिया अजीम घुमन को। गेंद बड़ा अच्छा स्विंग होता हुआ अंदर आया, आप देखना ही होगा कि बिल्कुल विकेटों के सामने थे या कुछ, क्योंकि अजीम घुमन लग रहा है मुझे खुश नहीं है, यहाँ देखना होगा। और मिड पे लगा है बॉल, लेकिन गेंद स्विंग हो रहा था, शायद लेग स्टंप को हिट करता। यहाँ अजीम घुमन बगैर रन बनाए वापस गए। एलबीडब्ल्यू बोल्ड यामीन, बलोचिस्तान 4 पर 1।
नए बैट्समैन मैदान में पहुंचे हैं। अली वकास जो कि अच्छी फॉर्म में हैं। पहले ओवर में उन्हें आना पड़ा। 4,816 रन उनके क्रेडिट पर हैं। 26 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 8 सेंचुरियाँ, 175 बेहतरीन स्कोर है। ये देखिए स्लिप कॉर्डन, 5 फील्डर स्लिप में आपको नजर आ रहे हैं। जाने दिया किसी मुश्किल के बगैर अली ने 4 पर 1। और ये LBW आउट दिया था एहसन रजा ने। था बड़ी टफ डिसीजन था आई थिंक, क्योंकि गेंद स्विंग होता वही जा रहा था, शायद मिस कर जाता लेग स्टंप को वे, लेकिन एम्पायर डिसीजंस। इस तरह पहला खिलाड़ी आउट हुआ बलूचिस्तान अजीम गुमन। इमरान फरहत अब फेस करेंगे यहाँ। अंपायर का यही ख्याल था कि गेंद ये लेग स्टंप को हिट कर जाती, और अगर ये करती लेग स्टंप को हिट तो शायद लेग स्टंप के बाहर की तरफ लगती। और अगर यहाँ पर इनके पास अंपायर के फैसले को चैलेंज करने की सहूलत होती तो हॉकाई पर मुमकिन है कि ये अंपायर्स कॉल पर आउट करार पाते। हो सकता है, लेकिन अजीम गुमन की इनिंग्स ख़त्म हो गई है, वो पवेलियन में आ गए, क्योंकि LBW डिसीजन ऐसा होता है कि समटाइम ऐसा लगता है नेकेड आई से कि बिल्कुल सामने है, लेकिन जब हम बाद में देख रहे होते हैं उसको तो वो ऐसा लगता है कि गेंद मिस कर रहा था। लेकिन एनीवे एहसन रजा बड़े अच्छे एम्पायर हैं। समटाइम्स उन्होंने जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि लगता ही पता चलता है कि आउट हो गया। और फिर फील्ड अंपायर के पास एक्शन रिप्ले की सहूलत नहीं होती। हम जो है 2-3 रिप्लेस देखने के बाद भी पूरे वसूख के साथ नहीं कह सकते, तो ज़ाहिर फील्ड अंपायर ने एक ही बार सारा मंजर देखना होता है, तो फ़ौरन फैसला देना। मार्जिनल डिसीजन था और पुल किया इमरान फरहत ने। यहाँ पर उनको रन्स मिलेंगे, 3 रन्स बनने चाहिए। इमरान फरहत पहुँच जाएंगे अपनी क्रीज में। ये स्ट्राइक रेट अच्छा रखेंगे, ये तो हम इनके बारे में कह सकते हैं वसूख से कि इमरान फरहत जब तक खेलेंगे रन्स आते रहेंगे बलूचिस्तान के लिए। अली वकास सामना करेंगे मदिलियास का, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ किया था, उसको इमरान फरहत ने पुल किया था। 3 स्लिप्स 2 गलीज के साथ मोहम्मद इलियास स्टंप के बाहर गिरा हुआ बॉल, गए थे खेलने के लिए। ये बड़ा प्रेशर टाइम होता है, बिल्कुल मैच जब ख़त्म की तरफ जा रहा होता है, न्यू बैट्समैन बॉलर को बड़ा मज़ा आ रहा होता है। नया बॉल देखें काफ़ी बाहर था, छोड़ सकते थे आराम से, लेकिन गए खेलने के लिए। यही जो है इलियास चाहते भी हैं कि बैट्समैन चेस करे। ये इलियास जो हैं ये अच्छे सीम बॉलर हैं, लेकिन राइट हैंड बैट्समैन को इन स्विंग भी कर सकते हैं जो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकलती है। ये स्टॉक डिलीवरी भी है इनकी, अपना वक्त लेंगे। अली वकास ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज़्यादा कट और पुल नहीं करते, आम लेफ्ट हैंडर की तरह ड्राइव ज़रूर करते हैं। काफ़ी अरसे के बाद ये भी वापस आए बड़ी क्रिकेट में। ये सीज़न इनका बेहतर गुजरा है, ख़ास तौर पर यहाँ बलूचिस्तान की सीनियर टीम के लिए। ऑफसाइड में खेलकर रन लेना चाहते थे, लेकिन इसका बिल्कुल मौका नहीं। जाहिद महमूद बर वक्त पहुँच गए। 7 पर 1।
सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई और आज के दिन उनके अलावा कोई बैट्समैन जो है वो एक 50 रन भी नहीं बना सका। देखिए अब तक 11 विकेटें गिर गई हैं, 263 रन बने हैं, अभी 6 ओवर्स का खेल बाकी है। और एक मौके पर 194 पर 9 खिलाड़ी आउट थे सदर्न पंजाब के। उसके बाद से आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में 62 रन बने और नई गेंद पर जल्दी विकेट हासिल की आमिर यामीन ने। तो मोमेंटम जो है ये पिछले हम कह सकते हैं 45 मिनट में इस टीम के साथ रहा है। तो ये नहीं भूलना चाहिए, यही सिंध के खिलाफ सेंट्रल पंजाब की टीम ने पहली इनिंग्स में 276 रन बनाए थे और बड़ी आसानी से उनने मैच जीत लिया था। अभी चंद दिन पहले की बात है, तो कम स्कोर पर भी आप फाइट कर सकते हैं इस ऐसी पिचेस पे। बिल्कुल फाइट किया है। जब 194 के ऊपर जब 9 आउट हो गए थे, उसके बाद 62 रन की जो पार्टनरशिप है, इसका मतलब ही ये है कि अच्छा फाइट बैक किया है लास्ट विकेट ने। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा गेंद स्विंग हो रहा है आमिर यामीन का। तो यही ज़रूरत होती है कि जब पहला ओवर आमिर यामीन का, देखिए सारी बॉल वो अंदर लेकर आए थे और ये लेग स्टंप पे जो गिरा था उस पर 4 रन मिले थे लेग बाय के। कवर करते हुए ये बॉल जिस तरह उनके लगा, और ये गेंद जो थी जिस पर विकेट मिली ये ज़रा सी आगे पिच हुई थी दीगर गेंदों की निस्बत। ये लाइन बड़ी अच्छी है आमिर यामीन की। इस लाइन के ऊपर बॉल करें तो बड़ा मुश्किल होता है और जिस तरह गेंद स्विंग हो रहा है उनका, तो बैट्समैन के लिए मुश्किल कर सकता है। और यही टाइम है कि इस वक्त ऐसे सीनियर प्लेयर को आप जो है आउट कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी होगा। ऑलरेडी एक खिलाड़ी आउट हो चुका है नए बॉल पे। बाहर कवर करते हुए इमरान फरत ने इनको जाने दिया विकेट कीपर के पास। अगर एक विकेट महमूद यहाँ और गिरती है तो उसके बाद क्या स्पेशलिस्ट बैट्समैन को भेजना चाहेंगे या फिर नाइट वॉचमैन की तरफ देखेंगे? बलोचिस्तान के जो हेड कोच हैं, आई थिंक प्रॉपर बैट्समैन को ही आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह आमिर यामीन बॉल करेंगे, विकेट गिरेगी तो वो नाइट वॉचमैन को मुश्किल करेंगे। और इस दफ़ा बहुत ही अच्छा बॉल और ड्राइव करने चले गए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत जिसे कहना चाहिए क्रिकेट में कि बैट्समैन को बिल्कुल जिसे कहना चाहिए पक्का किया, बाहर निकाल के एक इन स्विंगर किया। और यहाँ पर एक्सपीरियंस इमरान फरत पुश कर गए और उनका मिडिल स्टंप जाके ये बॉल लगा। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग आमिर यामीन की जानिब से। तो इस तरह दूसरा नुकसान उठाना पड़ा इमरान फरत की सूरत में। 3 रन बनाने के बाद आउट हुए 7 for 2। अकबर रहमान मैदान में आए हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन बलोचिस्तान के। 7 के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर्स वापस लौट गए हैं। इस तरह फाइट बैक जारी है सदर्न पंजाब का। इस मैच में आमिर यामीन
ने दोनों विकेटें हासिल की और दोनों बार उन्होंने फुल लेंथ गेंदों पर कामयाबी हासिल की। इमरान फरद का शॉट कदरे लूज था, यहीं पर ड्राइव करते हुए इसी अंदाज में बोल्ड हुए थे पिछले मैच में भी साधारण के खिलाफ, लेकिन उस वक्त तक सेंचुरी बना चुके थे और शायद ज़्यादा टाइट खेल सकते थे शाम के इस वक्त जब खेल ख़त्म होने के करीब है। शॉट लेग पर फील्डर तैयार हैं। शानदार बॉलिंग आमिर यामीन की, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। देखिए सेटअप करके आउट किया, बाहर निकालते रहे पूरा ओवर और एक अंदर लेकर आए बॉल। इमरान फरद को वहाँ पर डिसीव किया और मिडिल स्टंप पे जाके बॉल लगा। बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है दोनों अपने कामयाब ओवर। पिछले ओवर में अजीम घुम्मन को एलबीडब्ल्यू आउट किया और इस ओवर के अंदर इमरान फरद की बड़ी क्रूशल जिसे कहना चाहिए विकेट वो उन्होंने हासिल की। तो दो खिलाड़ी आउट हैं 7 पर 2। आम ख्याल यही था कि ज़ियाउल हक मोहम्मद इलियास के साथ नई गेंद करेंगे, लेकिन अच्छी चाल चली। देखिए गेंद छोड़ती हुई चली गई, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अली बुरी तरह बीट हुए। ज़ियाउल हक पर आमिर यामीन को जो तरजीह देना था, उमर सिद्दीक का ये फैसला उनकी टीम के हक में बहुत सही साबित हुआ है। अभी 4.5 ओवर्स का खेल बाकी है। कोशिश यही होगी कि एक विकेट आज स्टंप से पहले और हासिल की जाए। दोनों बैट्समैन 0 पर हैं। फिर बाल बचे। दोनों जो बॉलर हैं राउंड द विकेट आ रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स को उन्हें खेलने पर मजबूर कर रहे हैं इस एंगल से। हालिया दिनों में इलियास की रफ्तार जो है इसमें इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ कोचेस की निगरानी में इन्होंने ट्रेनिंग भी की है। इंग्लैंड से इयन पॉन्ट आए थे साधन पंजाब में, उन्होंने भी इनकी कोचिंग की और उसके बाद मुल्तान सुल्तान की भी ये टीम का हिस्सा थे। यहीं पर प्लेऑफ्स में ऊपरी हिस्से पर लगी एक मौका, फिर अच्छा इंडी पर था। यहाँ नए बैट्समैन को कोशिश यही होती है बॉलर की कि वो विकेट में कराएं, अंदर लेकर आएं, क्योंकि नया बैट्समैन इतना सेट नहीं होता तो चांसेस होते हैं कि अगर मिस करें तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होने के। बारह खिलाड़ी आउट हो चुके हैं आज के दिन में। बॉल फ्रंट फुट के ऊपर खेला। अकबर उर्मानी ने इस सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस की है, मेरे ख्याल से लास्ट मैच में स्कोर 100। तीन स्लिप एक गली के साथ आखिरी वक्त मैच का। और महमूद हमें ये 7वां मैच है इस साल कायदे आज़म ट्रॉफी का नेशनल स्टेडियम कराची में। जाहिर है कि स्टेडियम की जो पिच है ये शहर के दीगर फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ की निस्बत बैटिंग के लिए बेहतर समझी जाती है। वो टेस्ट सेंटर है पाकिस्तान का। तो पहले दिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा विकेटें किसी भी दो टीमों ने गंवाई हूँ यहाँ इस साल। बैट्समैन पर मौका ज़ाहिर नहीं करना चाहिए रन बनाने का इस पिच पर। एक और अच्छा ओवर इलियास ने किया, 2 विकेट पर 8।
गई। आमिर यामीन की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अली वकास इस मरतबा कोप नहीं कर सके और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। और 8 पर 3 सनसनीखेज क्रिकेट आमिर यामीन और सदर्न पंजाब की जानिब से राउंड द विकेट आए और ये देखिए अपना दामन नहीं बचा सके। अच्छा कैच लिया वहाँ पर मोहम्मद उमैर ने। अली वकास गए 1 पर 8 पर 3 बलोचिस्तान। What a day this has been for the further bowlers. 13 wickets have fallen already. And Amir Yamin is not finished yet. He's taken 3 wickets without giving a score. Testing times for Balochistan batsman Umaid Asif, the night watchman, now coming to bat. He's got an average of 18, 550s to his name, best of 97. Umaid Asif is up against the swinging Amir Yamin. What a nice pickup shot. It's a tough call from, oh, there's a misfield. We're gone for another one. You put night watchman back on strike. Amir Yamin wouldn't mind this. Would love to bowl to night watchman just to get that one more wicket. The ball is swinging. It's not easy for the batsman. We saw earlier how these top order batsmen tumbled against Amir Yamin. Abdul Rahman was eager to get back to the non-striker end. Yeah, these are testing times for Balochistan batsmen. Yeah, Abdul Rahman would have said, Umaid, you're the night watchman, you must be good. Come back and face the music. That's the catch, that's the wicket number 3. That's a good catch. High catch, they're right on top. Really like this guy as a cricketer, Amir Yamin. Whenever he gets into this 11, he makes his presence felt. 3 for 2. That's a tough call, sending a night watchman with almost 20 minutes to go. You don't want to make it 4. Yes, and that too against the swinging Amir Yamin. That's how he set up in run for it. He was just letting go outside the off-stump man. That's the one that straightens. No clue. Brilliant spell of bowling. He's taken 3 wickets and given away only 2 runs. Amir Yamin, that's what he's good at with the new ball. He swings the ball. Shorter one, pulled away. Just one taken that was in the air for a while. One of the over. Balochistan batsmen must be cursing their bowlers. Why did you let the last wicket partnership go for so long? There was a more than 50 runs partnership for the last wicket. It took 2 lots of. That's how the wickets fell. The ball was swinging. This was a pitch over delivery. Brilliant bowling by Amir Yamin. And good captaincy also by Umar Siddiq. He's got that slips going on. And Faraz was bowled. A beauty of delivery. What must he be thinking? Tamur Ali
He would be wishing not to go there at this time. These are testing time, difficult times for batsmen. The ball is swinging for both Ilyas and Amir Yamin. Again, talking about the last wicket partnership between Zahid Mahmood and Ziaul that took more than 1 hour and gave away these 20-25 minutes for Balochistan batsmen to come and bat. Always testing these times. How many times you've seen wickets fall in the last few minutes of the game? Both these bowlers from Southern Punjab will test you. He's getting some movement off the surface as well. Got to really cover the line of the ball, make sure their bat is in front of the pad. You don't want that stuck behind your pad because they're aiming for the stumps at this point in time, and that's the difference which was missing. You talked about the last partnership. Everything was like a short ball, allowing them to score runs left, right. But these two bowlers are swinging it and aiming the stumps. They have to play them. You can't let that go. Ah, yes. And a sound game all the way up here. Half-hearted approach, and there goes another batsman, Akbarur Rahman. That's 4 down for 12. Oh, Balochistan, what have you done to yourself? 4 wickets in the 6th over already. Oh, look at this. Beautiful length. So nothing short. I mean, why would you play at that? In the testing time, the last few overs, you just played onto it. Bat shot. It was well caught by Umar Siddiq off Ilyas. 1 run for Akbarur Rahman. Temuri now in to face the music. Steaming in Ilyas. He's bowled well also alongside Amir Yamin, who's got 3 wickets. It's 12 for 3 of Balochistan. In trouble. Southern Punjab are right back in this game. They were struggling at one point in that last partnership. And now this. 70 matches for him. 3,276 runs at an average of 27, 18 50s and 400s to his name. Best of 129. But this is a different situation. Yeah, a while ago he was sitting in the balcony. Now he's out there in the middle. 12 for 4. Oh, he took his eyes off. That's hit him. Ricochets off his body. He didn't offer a shot. Leg by signaled, and that's a boundary. It was pitched in short, but didn't bounce as expected. Hit his helmet. And it's gone down. So protocol follows. The physio will come out and have a word with him. It's hit the back of the helmet, but that's not a very clever way. Taking your eyes off, you're exposing your neck, and he doesn't have a stem guard, by the way. So he's just going to ask him a bit of a count. A bit of a check on the neck. In the background, Umayyad Asif again brings back that question. Sending a night watchman, and then you expose the next batsman to the fall of the next wicket. This just doesn't really fall right with me. I don't understand. Why wouldn't you send another night watchman? That's the edge. Akbarur Rahman going. Both these bowlers are very good. Ilyas. He got the first ball to come in to the batsman from the surface. This one slightly moving away, and he's just hanging his bat away from the body. All well. The physio's gone back, and Temur is back on strike after that
boundary that was off his helmet, like by a signal. 16 for 4. 2 more balls. Going to be eventful. Ooh, wide outside the off stump, hitting the seam. Just jags back. Yeah, the ball is swinging for Ilyas also. We all know Amir Yamin is a specialist new ball bowler, and this man Ilyas is the most improved bowler in the last 6 months or so. He's increased his pace. Smooth run up with a lovely action. Can he get one more? Oh, there's an appeal. There's inside edge maybe. It's everything happening for Southern Punjab. 6 gone at 16 for 4 now. If you're wearing pads and a helmet, you're looking at the clock. It's 10 past 5. You've got another, if I really push it, another 8 to 9 minutes of this. Amir Yamin. What if they can get one more? Imagine half the side back into the changing room. Who would have thought at lunch Balochistan were in such a commanding position in this match? And that man is Azam, the bowling coach for Southern. Must be very proud of these 2 young bowlers, Amir Yamin and Ilyas. They've done so well. It's so good to have somebody like Azam who's played this modern day cricket also, understands the game. Must be very good for these young bowlers to be coached by somebody like him. And these 2 gentlemen, they were just here, right? Now they're there. They pretty quick. Yeah, they're getting themselves ready to dissect the batting performance, I'm pretty sure. Impressive, Quaid Asif up till now. Hasn't looked in any sort of trouble. He's tall, he's bending his back, offering the full face of the bat. He's programmed himself not to touch anything outside the off stump. This is what's happened today. 256 all out. Zayed Mahmood along with Ziaul Haq having a last wicket partnership of 50 plus. That's given some respectability to the total. And then Balochistan making a mess of it. 16 for 4. That's the sun setting here in Karachi. It's been hazy all day. We expected a bit of a change, a little clearer weather later on, but it has been, which is why usually you have a little more light than this at this time of the day. You do get those shadows, but right now it's quite murky out there. You got to wear those caps on top of your hats because the umpires won't take them according to the new SOPs. Oh, that's a good shout. That is a good shout. That is a good shout. He was walking into the stroke. He's a tall man. Got to see that again where the impact is on the pad. Pitch all right, but maybe going down a bit and a high. He's a tall man. Above the knee roll means over the wicket for sure. Hassan Raza is a very good umpire. Makes very few mistakes. Quaid Asif's got a few 50s to his names, but this is testing times, difficult times for batting. Got to survive these last few overs. You're up against Amir Yamin, the swinging Amir Yamin. He's got 3 wickets to his name. $16 for 4.
Ilyas will continue. Taimur faced 3 deliveries, looked shaky. Again, teasing line and length by Ilyas, just making the batsman come and play to it. That has been the quality of these two fast bowlers, Ilyas, and they've just looked to ball at wickets, at the batsmen, make them play. They've been rewarded by 4 wickets, 4 important wickets, all top order batsmen. One for Ali Waqas, Azim Guman, Akbar Rahman, all these big players gone now. Southern have an upper hand in this game now. Desperately trying everything, trying to york them, getting the ball to swing in, a couple of them outside the off stump, trying to find a way to get the 5th. This one then goes out. 2 coming in, 1 going out. And then the helmet. First ball for Taimur. Then this comes in off the surface. Then inside edge. Gonna have a look at the light. The light meters are out because it is quite hazy. Will the light meter save them? Well, I don't know if I should say save them. They're 16 for 4. They're calling it off. Yeah, they are. So that's it. 7.2 overs were bowled today, and that sets the light meter at a reading that will be followed for the days to come in this match. Night watchman survives, and so does Taimur. This session, 8 wickets, and 4 of them belong to Balochistan. All top order back, courtesy some brilliant bowling from Amir Yamin. 3 for him, 1 for Ilyas. And it's been Southern Punjab. So the first 2 sessions went to Balochistan, and after that, that last wicket partnership from Southern Punjab, and then these 4 wickets totally taken the limelight away from Balochistan. Southern Punjab control this. It's very well done. Total of 14 wickets have fallen today. Brilliantly done. So round 7, day 1 between Southern Punjab and Balochistan tell us this story. Across 3 sessions, 14 wickets, 256 from Southern Punjab when they won the toss and batted first, and Balochistan are 16 for 4. There's the 3rd session where this is a good catch taken. Amir Yamin was the one who was dismissed. Deep backward square leg, then some good drives from Imran. Some sweep shots from him. He showed some resistance in the end, coming down the wicket and making a mess of it. Caught. Some slogs from the lower order batsman, trying to add good score, make some use of it, but then falling short. Caught at mid-on. Then the testing period actually started with Zayed Mahmood and Ziaul Haq for the bowlers of Balochistan. Some very clean hits, and this was the stumping after quite a few damage was done. 256 is what they scored. Southern Punjab all out. Out came Balochistan, and they lost their first wicket in the name of Azim Guman. It was the first ball, leg bias to a boundary. Then this was the LBW shout. Ehsan Raza was sure that that's gone. Then this was Imran Farad, the captain, bowled, nicely done. A couple of them outside and then one coming in. And then it's a sharp rise, nice ball shaping away from the left-hander, caught in 3rd slip. And Ilyas gets his first and makes it 4 down with that caught behind, and Akbar Rahman went. So Balochistan reeling at 16 for 4 after facing 7.2 overs. They've got the night watchman Umaid Asif and Taimur. What do we talk about? Partnerships here, nothing there. Yamin 3 for 4 and 1 for Ilyas. The 2 bowlers have used the new ball perfectly and got the results as well. And the toss was won today by Southern Punjab. They got 256 all out. Salman highest score 50. Zayed Mahmood got a fiery 45 for 45. And 3 for 66 for Taj Ali, the top wicket taker.
And then it's all about bowlers. Yamin 3 for 4. Brilliantly done. Ilyas 1 for 4. Balochistan trail by 240. We'll take a short break and we'll come back with the show. Southern Punjab wrapped up in their first innings 256 with the highest of 50 from Salman, 40 from Zain, and what about that? Zahid Mahmood 45. A good fight given by the last wicket, taking the score from 194 for 9 to 256 all out. And it shows in the partnerships as well. 75 the biggest partnership, but this one important. Ziaul Haq and Zahid Mahmood 62, adding some respectability to the total 256. Bowlers 3 for Taj Wali, 2 each for Umaid, Kashif and Jalal. They probably would feel that they've given extra 50-60 runs for the last wicket, but they still did well to wrap them up at 256 in 79.5 overs. So day one comes to an end, and wow, what a start for Balochistan. They've been in problems when they were bowling, and now in the batting they've completely messed it up. 4 down for 16, and they're in trouble with Umaid Asif, the night watchman, surviving because of bad light called on first day. Yamin, 3 wickets for 4, coming back into the side and making his presence felt. Ilyas gets 1. 16 for 4 in the 7.2 overs faced by them. And in the match summary, 256 all out, and in reply 16 for 4 Balochistan, and they're trailing by 240 runs. Let's see what happens on day 2. Thank you very much for joining us for the highlights, and it's goodbye until next time. कराची का शहर साहिल और सहरा के दरमियान है और अक्सर यहाँ हरियाली कम उगती है। शायद इसी कमी को पूरी करने के लिए नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ ने आज पिच पे एक बाग खड़ा कर दिया है और 14 विकेटें गिरी हैं। आज मैं हूँ अमर नकवी, मेरे साथ मौजूद है सलमान भट्ट और अली यूनुस। अली, आज सुबह जब आपने पिच रिपोर्ट की थी तो आपको कोई अंदेशा था कि इतना तबाहकुन दिन होगा बल्लेबाजों के लिए? देखिए, इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि जैसा हो गया। ज़रूर डेफिनेटली घास था थोड़ा सा, बट स्लो था शुरू में विकेट। जैसे हमने देखा दिन गुजरता गया, थोड़ा बॉल अच्छा कैरी होना शुरू हो गया। शुरू में जिस तरीके से हमने देखिए अच्छी बैटिंग की पहला घंटा सदन ने, लेकिन देन अगेन बहुत रेकलेस हो गए उसके बाद। पहले घंटा गुजारने के बाद जिस तरीके के उन्होंने शॉट्स मारे, जिस तरीके से इजी विकेट्स दे दिए, तो उसमें काफ़ी अपर एंड हो गया था बलूचिस्तान का। बट थैंक्स टू देम, दे हैव मेड देम कम बैक इन दिस गेम।
सलमान, ये अभी बात की अली ने पहले घंटे की, जो नेशनल स्टेडियम पे बिलखुसूस सबसे अहम होता है, जब उस दुश्वारी को उन्होंने पार कर लिया था तो उसके बाद क्या गलती की है सदर्न पंजाब ने? देखिए, आई थिंक परफेक्ट वर्ड यूज़ किया है अली ने, रेकलेस। मतलब दे हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम, नोबडी आस्क्ड हिम टू डू इट। आपने मुश्किल वक्त गुजारा, नाउ इज़ द टाइम टू हार्वेस्ट। जब टाइम आया रन्स करने का और आगे बेहतरी की तरफ जाने का, दे जस्ट केप्ट लूजिंग विकेट्स। एंड देन लास्ट में द बलोचिस्तान टीम दे मेड श्योर कि उनको कोई लॉस अपनी वजह से फील ना हो, फिर उन्होंने फिर गलतियां शुरू की और फिर दिन का अख्ताम जिस तरह हुआ। आई थिंक कि अगर पूरे दिन में हम देखें तो आमिर यामीन का एक ऐसा स्पेल था जिसने इम्पैक्ट क्रिएट किया, बैट्समैन को मुश्किल की, आउट स्विंग पे पका करके फिर आप अंदर लाए। इमरान फरद इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को आउट किया, फिर उसके बाद ऑफ लेंथ बॉल उठा किक किया, वहाँ पे विकेट ली। उसके अलावा अगर हम पहली बैटिंग साइड की बात करें साउथ पंजाब, तो उन्होंने तो अपने विकेट्स गिफ्ट किए हैं बॉडी से अवे खेल के। थोड़ा सा अगर सदर्न पंजाब के ओपनर्स हैं बिलखुसूस जो गलतियां की हैं, उस पर अगर आप थोड़ी नज़र डालें। देखिए, बिल्कुल एक चीज़ प्रसिस्ट कर रही है। मैं जितने ये मेरा तीसरा मैच है, व्हाट आई हैव सीन इज़ द टॉप ऑर्डर बॉडी से अवे खेलते हैं। जब विकेट्स गिर रही हैं तो बॉडी से अवे खेल रहे हैं, उसकी फीट मूवमेंट नहीं है। देखें, एज अ बैट्समैन इधर यू हैव टू बी फॉरवर्ड और बैक फुट, या फ्रंट फुट पे खेलते हैं या बैक फुट पे खेलते हैं। यहाँ पे इन बिटवीनर्स बहुत है। सो आई हैव रिक्वेस्टेड अ बैट फ्रॉम द प्रोडक्शन टीम, और इंशाल्लाह टुमारो आई विल डेमोन्स्ट्रेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये तो खैर वो बॉल हैं जो उन्होंने ब्लॉक किए हैं। जब आउट होंगे उन बॉल्स को अगर स्क्रीन पे खिलाएं तो आप देखेंगे कि बॉडी से अवे है, फार अवे है। सो आई थिंक इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। सुबह जब मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा देन आई विल स्पीक अबाउट देम। ठीक है, तो यह जैसे कि आपने देखा है, जो विकेटें गिर रही हैं उस पर दोनों शॉट्स पे जो है जिस तरह के भी बॉल थे विकेट से बाहर थे। मतलब अगर आप इन बॉलों को ना खेलते तो आपने छोड़ सकते थे, लेकिन कहीं पे भी बैट्समैन की पोजीशन कोई ऐसी नहीं थी कि ही वाज रेडी टू प्ले अ शॉट। इट वाज लाइक कंफ्यूज, डबल माइंडेड विकेट्स गिरा रहे हैं। तो इधर इट इज़ अ लॉस ऑफ फोकस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, या बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने के बाद फ्रस्ट्रेशन है, एनी थिंग ऑफ दीज थ्री। बट ये होनी नहीं चाहिए। ओपनिंग बैट्समैन इज़ देयर टू गेट थ्रू अ सेशन। तो इफ़ यू कांट डू सो दैट मीन्स यू आर लैकिंग। अली, जैसे कि सलमान ने बताया बैट्समैन की काफ़ी गलतियां थी, मगर फिर मैच के दूसरे हिस्से में सदर्न पंजाब ने काफ़ी फाइट बैक किया। सबसे पहले उनकी जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी और जाहिद महमूद की इनिंग्स, इफ़ यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हिज इनिंग्स, आई थिंक स्कोर्ड अराउंड 45, व्हाट वर यू मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय? देखिए, हिज एबिलिटी टू प्ले स्ट्रोक्स, आई थिंक सबसे अच्छी यही बात रही है। उसने इतना टाइम कंज्यूम कर लिया, वो घंटा डेढ़, अगर थोड़ा पहले बलूचिस्तान की बैटिंग आ जाती तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती, थोड़ी आसानी हो जाती। तो द क्वालिटी उनकी यही थी कि उन्होंने स्ट्रोक्स अपने खेलते रहे, क्योंकि ही हैड नथिंग टू लूज़। आखिरी विकेट के साथ बैटिंग कर रहे थे तो स्ट्रोक्स जितने मैक्सिमम वो रन्स कर सकते हैं उन्होंने वही कोशिश की कि जितने रन्स हो सकें वो किया। एंड दैट गेव देम, वो जो आखिरी आधा घंटा था, वो आधा घंटा बहुत ख़तरनाक हो जाता है। हमेशा ही हमने देखा इस ग्राउंड में कि आखिरी आधा घंटे में बहुत विकेट्स गिरते हैं, और शायद यहाँ पे बहुत गलती होगी बलूचिस्तान से कि आखिरी विकेट को इतने रन्स करवा दिए, इतना टाइम कंज्यूम करवा दिया कि अपने आप के ऊपर इतनी मुश्किलात डाली आखिर में बैटिंग करके। अभी आपने तो जिक्र किया था सलमान आमिर यामीन की बॉलिंग का, जो वो टैक्टिक्स कर रहे थे, क्या वो इस पिच का ऐसा फ़ायदा उठा रहे थे जो बलूचिस्तान के प्लेयर्स नहीं कर पाए? मतलब सवाल मेरा यह है कि क्या बलूचिस्तान के प्लेयर्स ने अंडर परफॉर्म किया है उनके बॉलर्स ने? आई थिंक कि आमिर एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, नया बॉल करते हैं, आइडिया है अपनी स्ट्रेंथ का, दोनों स्विंग करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया। ही वाज स्पॉट ऑन विद हिज लाइन एंड लेंथ। नया बॉल है एट दिस टाइम ऑफ द डे। आज आपने देखा कि कराची में जिस तरह धूप निकलती है नॉर्मल नहीं थी, सो विकेट ने उतना चेंज नहीं उसमें आया जितना नॉर्मली इस टाइम तक विकेट बेहतर हो जाती है। सो उसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन बैट्समैन, अगर आप ये कहें कि बैट्समैन को आपने थोड़ा सा फेवर करना, लिवरेज देना, तो यू कैन से आमिर बॉल्ड रियली वेल, बट आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं थी सिवाय एक बॉल जिस पे अली वकास आउट है, उसके अलावा कोई ऐसा बॉल नहीं था जो कि अनप्लेबल हो। आई थिंक ए बैट्समैन विद देयर फीट मूवमेंट, विद द गैप बिटवीन देयर बैट एंड पैड, दे हैव देयर वीकनेसेस व्हिच आर राइट इन फ्रंट एंड दे हैव टू वर्क फॉर देम। अली, अब ये अगर शायद मैच रुकता 3 बजे तो बलूचिस्तान की टीम काफ़ी अच्छे स्पिरिट्स में होती। आपके ख्याल में अभी जो ये 4 विकेटों का नुकसान हुआ है आखिरी आधे घंटे में, उनका कितना ज़्यादा उसका असर पड़ेगा इनकी टीम पे इस मैच में आगे जाते हुए? देखिए, बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा था जब सिंध पहली इनिंग में 92 पे आउट हो गई थी, तो वहाँ से कम बैक करना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये 4 मेन उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, इमरान फरद हैं जिसके अंदर अकबर रहमान है, और भी मेन प्लेयर्स हैं उनके, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हालात यहाँ से कम बैक करना। एंड देन अगेन जब आपने कल आना है तो पहला घंटा डेढ़ तो वैसे ही मुश्किल होता है, और जैसी स्विंग कर रहे हैं दोनों, इलियास और अभी ज़ियाउल ने बॉलिंग करने आना है, तो आमिर यामीन, ये तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत ही अच्छे हैं, स्विंग बॉल करते हैं, तो पहला घंटा बहुत मुश्किल होने वाला है बलूचिस्तान के लिए। सलमान, शुरू भी आपने सुबह में तनकीद की थी कि ये एक फ़ास्ट बॉलर कम खिला रहे हैं।
अब जिस तरीके से आप पिच को देख रहे हैं, मौसम को देख रहे हैं, क्या इस सिलेक्शन की वजह से ये पहले से अभी से ही मैच हार चुके हैं या कमबैक की पॉसिबिलिटी है? ऑब्वियसली उन्हें लॉस तो हुआ है। जब आपने अर्ली विकेट्स ले लिए तो जब टेल एंडर्स जो थे वो अपने बैट घुमा रहे थे, दे वर टेकिंग देयर चांसेस, तो वहाँ पे अगर आपके पास तीसरी ऑप्शन होती, स्पेशली तलहा की सूरत में जो कि क्विक है, 140 प्लस बॉल करता है, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर बैट्समैन टू स्विंग, और यूजुअली टेल एंडर्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पेस आर अनकंफर्टेबल। तो इसका उन्हें नुकसान तो हुआ और विजिबल है, और समझ नहीं आई कि आपने पिच भी देखी तो आप दो एक जैसे स्पिनर्स खिला रहे हैं और फिर दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर, और देखें कि ऑपोजिशन में 4 से 5 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर्स हैं। सो दैट डिडंट मेक एनी सेंस, द डिसीजन टू प्ले 2 लेफ्ट आर्मर्स, और उन्होंने कोई इम्पैक्ट नहीं किया। 6 से ज़्यादा एक का इकोनॉमी रेट है और दूसरे को भी एक विकेट थी कोई अराउंड 90 रन तक, फिर लास्ट विकेट उन्हें मिली, सो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया, उल्टा लॉस हुआ है। अब अली, इस मैच में दोनों कप्तानों के लिए कल सुबह क्या स्ट्रैटेजी होगी अपनी टीम्स के लिए, क्या बोलेंगे वो? देखिए, सर्दन के लिए तो सिंपल है कि जितनी जल्दी आके विकेट ले सकें, एंड देन अगर हम बलोचिस्तान की तो ऑक्यूपाई करें, पहला घंटा निकालें, एंड देन लेग टू जितना भी करीब जा सकें स्कोर के तो बेहतर होगा। तो आपने सुना अली यूनुस और सलमान बट से, काफ़ी मुश्किलात में दिखाई दे रही है बलूचिस्तान की टीम, काफ़ी जारहाना क्रिकेट देखने को मिली हमें, और शायद कल भी जिस तरीके से ये पिच नज़र आ रही है बॉलर्स का अपर हैंड हो, मगर ये सब देखने के लिए प्लीज़ डू जॉइन अस टुमारो लाइव फ्रॉम द नेशनल स्टेडियम वेयर डे 2 ऑफ बलूचिस्तान वर्सेस सदर्न पंजाब विल बी कंटिन्यूइंग। And that's in the air and out. That's a good shot. This time he's got more power into it. कदमों का इस्तेमाल किया है, हवा में बॉल, फील्डर नीचे है, कैच आउट हो जाएंगे। इस दफा बहुत ही अच्छा बॉल।